दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है द म्यूजिक पॉडकास्ट में। आज हमारे पॉडकास्ट में पहली बार एक पूरा बैंड, इंडिपेंडेंट बैंड आया है। – 2015 में इन्होंने शुरुआत की। इलेक्ट्रॉनिक और रॉक म्यूजिक को ये ब्लेंड करके अपने गाने बनाते हैं। इनके गानों का लिरिक्स जो है वो बहुत ही इमोटिव और सोलफुल होता है। 3 EP ये रिलीज़ कर चुके हैं और कुछ गाने जो बहुत फेमस हैं उनमें से गाना है मर्ज, मन, तेरे जिया होर दिसदा, नुसरत साहब की एक रेंडिशन उन्होंने की थी, रोज़ रोज़ विद शिल्पा राव एंड धीरे से। 8 साल हो गए, 9 साल हो गए तकरीबन इस बैंड को। काफ़ी सारे लाइव परफॉर्मेंस कर चुके हैं और ये काफ़ी फेमस है अपनी स्पेस में। तो इनवाइट करते हैं इस बैंड मेंबर्स को। बैंड का नाम है द येलो डायरी, आप सब जानते ही हैं। सबसे पहले उनके लीड वोकलिस्ट और लिरिसिस्ट राजन बत्रा, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। प्लेजर। दूसरे हैं उनके कीबोर्ड प्लेयर और बैकिंग वोकलिस्ट हिमांशु पारिक। हिमांशु, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। उसके बाद है उनके बेस प्लेयर स्टुअर्ट डिकोस्टा। स्टुअर्ट, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। और साथ में है साहिल शाह जो कि उनके ड्रमर है, वेलकम टू द म्यूजिक पॉडकास्ट। और जो आए नहीं है वो है हर्षवर्धन कपूर, सॉरी हर्षवर्धन गढ़वी। सो हर्षवर्धन आज आए नहीं है, उनकी तबीयत खराब थी। विल मिस यू हर्षवर्धन। Well, this can be harsh, bro. Yeah, right. I told you. I told you. So, पहला सवाल, आप लोग जब ने बैंड शुरू किया था उसके पहले आप लोग सब ऑब्वियसली कोई भी इस द येलो डायरी नहीं था। उस टाइम जब आप लोग कभी भी किसी आर्टिस्ट को देखते थे या सुनते थे तो आपके मन में वो कौन से सवाल आते थे जिनका आपको जवाब चाहिए था? I think हम सबकी जर्नी बहुत अलग अलग पॉइंट्स पे शुरू हुई है एज म्यूजिशियंस, एज आर्टिस्ट्स। मेरी जिंदगी में मेरा जो मैंने पहला कॉन्सर्ट देखा था वो था के का। SRCC पे वो परफॉर्म कर रहे थे और शायद जो पहला सवाल दिमाग में आया था वो ये था कि क्या कभी मैं अपने आप को इस स्टेज पे देख पाऊंगा या ऐसे किसी स्टेज पे देख सकता हूँ। द आइडिया ऑफ Being एक there. आर्टिस्ट Correct. being in front of you, being that artist, is that even possible? That was the question. Fair enough. हिमांशु? For me, again, I was also very young, but ये thought था कि मुझे future में I want to be doing this for the rest of my life. Like when I would see a band like Coldplay, for example, growing up or anything, और मैं पढ़ता था कि ये लोग ने 1-2 महीने they've gone somewhere और उन्होंने बैठ के एल्बम लिखा है, you know, और their days के वो लोग मिलेंगे, रिहर्स करेंगे, they go for gigs. So I was always like, मुझे ये करना है लाइफ में, कि my work and my life is to make music with people around me that I love. So the whole gap of how was like I just learned along the way. But that time there was a blanket like कुछ तो करना है music में, but eventually I want to make music for a living. Okay, Stuart, for you? So I got into a band in college. मेरा एक band था Something Relevant और Something relevant. Something Relevant. Good name. Thank you. We tried. To stay relevant. Yeah, I mean, a band is a very fragile thing. You know, it's a lot of people, and everyone has their own idea of what it should be. But when we got into it, we weren't thinking like logically. I feel like it was a more passion-based decision. Like, and the feeling that you got from being on stage, वो feeling कुछ और ही है। मतलब जब आप stage पे हो, सबके आंखों आप पे है, that performance feeling is empowering. It's like your brain is on fire with all this like feeling. I really appreciate you trying to talk in Hindi, you know. कोशिश करूँगा, कोशिश करूँगा। सबकी आंखों उन पे है। अभी हर्ष होता ना तो हम लोग हंस पड़े होते। मैं देखा था वो स्मर्क, तेरे को भी आ रहा था, मेरे को भी आ रहा था, ये नीचे देख रहा। ऐसे मोमेंट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। Yeah, but simultaneously I was studying also, and I had studied BMM, and उसके बाद I got into an advertising agency, and at the same time the band was like getting gigs, shows मिल रहे थे,
So one day we got an ICCR tour, Indian Council for Cultural Relations. So they took us to South Korea, they took us to Indonesia, Malaysia. So we played a string of tours. And then I came back and I sat on my desk at the office at O&M, Ogilvy and Mather. And then I was like, kya hai ye? Like, what is this? Why am I listening to that boss of mine who I don't like also? Whoa. Bury the hatchet, everything is fine. But I realized that you're only given one life, right? And if you don't choose something you love to do, it's not a money-based decision. I mean, if I got into it for the money, it would be a stupid decision, you know? So I decided then and there that like, I'm not going to spend my life doing something I don't really want to do. I would much rather spend it making something that I love and spend it with people that I love, you know? So for me, that was the decision that, chalo, full power, just go into music, see where it goes, see what can become of it. And it became a full-time profession pretty quickly. Congratulations to it. Not too many people are able to take that decision. I mean, And you have to study it yeah. also, you know? You can't just be like, music karte hai. a lot But of people who also- take it also doesn't end up becoming successful. So congratulations on both. But also to the answer your universals. question, your question was कि वो सवाल क्या था? तो सवाल था कि क्या है ये? क्या कर रहा हूँ मैं? क्या है ये? So I had this same kya hai ye moment when I was doing my internship in engineering also. Man, I think it was my seventh semester engineering, and it was a forced internship, 6 months. Worst 6 months of my life. But best 6 months of my life because that's why I'm a musician today. I went there, I sat in the office, and the second day I was like, ये तो नहीं कर पाऊंगा मैं. इसमें excellence तो कभी होगा ही नहीं मतलब. जिंदगी कट जाएगी और weekend से मजे करेंगे. But this is not what I want to live. If I'm spending all my time here, like, why am I working? Like, I want to enjoy life. So my kya hai ye happened over there. I was like, क्या है ये? I was like, yeah, like, music. I have to do music. My क्या है ये happened from my mom's side. क्योंकि मैं उनके business में काम कर रहा था और मेरी mom बोलती है क्या है ये तू म्यूजिक कर तू ये छोड़ तेरे से नहीं आएगा. No, but I did learn drums like for a very long time. तो मैं जीनो सर से मैं बहुत सीखा हूँ. Gino Banks. हाँ, जीनो बैंक्स से. So उनके क्लासेस में सब आते थे. जीनो बैंक्स, जयराव कवि. So जिन Gino Banks का नाम लिया, Gino Banks is a legendary musician from our country, and Jero Kavi currently is one of the best drummer in India we have. 100%. And I used to go watch them play. और of course the questions that you all had, वो questions मेरे पास भी थे. But मेरी एक question से हमेशा I wanted to know कि तुम लोग इतने लोगों के सामने play कर रहे हो, तुम लोग की फटती नहीं है क्या? मतलब स्टेज पे जाने के पहले how are you not nervous about like having to play in front of such a big crowd? That for me was something I could never like, क्योंकि you practice, आप घर पे practice करो, you are getting better, you are playing in a jam room, that's one thing. Once you go on stage and then once you see the audience, I have played so many shows before I joined the Yellow Diary that were like, कितना भी prepare किया है मैंने show के लिए, but on the day of the gig, उसका preparation कभी नहीं हुआ. Like you have to go through that grind of playing a show again and again and again to then get to a point where at least I felt confident कि चल हाँ अभी ज़्यादा. I mean till now also there are some big shows that we play. I am always like on the edge कि first song has to be good. If the first song is not good, Oh, well. उधर के it's only downhill for me from there. 100%. Yeah. I think for all of us. Yeah. But now it's gotten a little But better those for shows me. where you feel the butterflies, this is Yeah. the best one. Best Yeah. ones. 100%. Yeah. Now, relevant questions for all the people who might be forming a band or who are in the band. Ki, what are the 2-3 things that are the most important things to keep a band alive for a longer term? So, I would say do's and don'ts. कि ये तो आपको करनी चाहिए for sure, must have. और ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. Anybody can answer and add points. I feel like do's don't format me. I don't know if I can answer the question back, but I think the most important thing in a band is the relationship. जो आपका
जो डेप्थ में रिलेशनशिप जो आपका है, दैट्स द डेप्थ दैट यू गोना गेट इन योर म्यूजिक एंड द लॉन्जेविटी ऑफ द बैंड. So the biggest do I think is communication and openness. मतलब कोई भी कुछ भी कह सकता है. ऐसा नहीं कि आपने कह दिया तो मेरा ईगो हर्ट हो गया, या उसको ऐसा मत बोल उसको बुरा लगेगा. कुछ नहीं. हम लोग सब एक दूसरे को कुछ भी बोलते हैं. And we Not all kuch bhi, not kuch bhi. You know what I mean? You know what I mean? मतलब usually productive. हाँ, आपको कुछ बात चुभी है, Yeah. ऐसे amongst us we'll never feel कि यार मैं उसको बोलूँ नहीं कि मुझे गलत लगा क्योंकि मैं छोटा हो जाऊंगा. There's never that thought. You are always a great equal in my mind, whether you are going to cry about someone who's cut you off in traffic, or you've had a bad breakup, or you have spilled your ice cream and you're making a fuss about it. It's fine. You're not a smaller person, you know. So we respect and cherish this relationship more than the music and the business, and then everything follows through after that. इन द सेम लाइक लाइन ऑफ थॉट, जब मैं पहली बार इसको मिला था तो हम एक गाने पे काम कर रहे थे जो कभी बना नहीं, पर उसके बाद हम, क्योंकि मेरे को इसने कोल्ड प्ले का एक वर्जन बनाया था पैराडाइज का, और उसने वो डाला हुआ था, और मैं भी बहुत बड़ा कोल्ड प्ले फैन हूँ, हम इनफैक्ट सभी हैं. तो वो मैंने सुना, वो तो मेरे को तभी से ये था कि मेरे को इस बंदे के साथ काम करना ही है. तो वो गाना जब नहीं बना तो आई वाज लाइक ये तो ऐसा तो नहीं चलेगा, मुझे एक गाना बनाना है. फिर हम मर्ज पे काम करना हम शुरू कर रहे थे, तो उस मोमेंट पे आई डोंट नो क्या हुआ, वो सिनर्जी ऐसी थी, या वो मोमेंट में आई डोंट नो वो ब्रदरहुड भर गया था दोनों में, जो भी था. आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज लाइक यार मुझे नहीं पता मैं कितने गाने अफोर्ड कर सकता हूँ तुझसे बनवाना, बट मेरे पास बहुत सारे गाने हैं. एंड द वे वी वर वर्किंग, द म्यूजिकलिटी वाज रियली, बहुत ऐसा लग रहा था कि अगर ये ऐसा ही होना चाहिए, ये गाना ऐसा बनना चाहिए, और वो साउंड कर रहा है. तो मैंने सीधा से पूछ लिया, यार डू यू माइंड कोलैबोरेटिंग विद मी, बिकॉज बहुत सारे गाने हैं, हम कितना कुछ कर सकते हैं. सो ही लुक्ड एट मी एंड इन दैट सेकंड, उसी मोमेंट पे उसने बोला हाँ श्योर लेट्स डू इट. बट आफ्टर अ पॉइंट मैं अपने घर गया, ये थोड़ा इसने भी सोचा होगा. फिर थोड़ी देर बाद मुझे कॉल आया और इसने बोला कि यार लेट्स डू वन थिंग, हम कुछ भी शुरू करने से पहले लेट्स गो आउट एंड हैंग. इफ वी कैन हैंग वी कैन मेक म्यूजिक टुगेदर. एंड आई थिंक ये ना, इवन इफ यू टेक दिस एज अ मेटाफर, आप और चीज़ों में इम्प्लाई करो ना, तो भी ये फिट होता है. आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो किसी बंदे के साथ में, और अगर आप सिर्फ नंबर्स और थ्योरी और ये सब कर रहे हो और आपने एक रिलेशनशिप बिल्ड करी नहीं है, तो आफ्टर अ पॉइंट वो छोटा बड़ा ये जो हम बातें कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होके आती हैं. लेकिन अगर आप दोस्त हो, अब हम लोगों के साथ ये है कि हम ये सोच के मिलते ही नहीं है कि आज हम म्यूजिक बनाएंगे, ऑनेस्टली नहीं मिलते. सबका एटलीस्ट मेरा इसका, हम चारों पांचों जितने भी हैं, हम लोगों का सीन ये होता है कि यार बहुत टाइम से हम मिले नहीं है, चलो लेट्स हैंग. पता है हमारा हैंग होगा स्टूडियो में, हमारी मोड ऑफ कॉन्वर्जेशन है म्यूजिक, और उसमें कुछ ना कुछ बन के आएगा, एंड दैट विल बी व्हाटएवर द यू नो मोमेंट कॉल्स फॉर. बट वी डोंट मीट टू मेक म्यूजिक, we meet to meet. Wow. And I think that's the biggest do for anybody who wants to start a band. Yeah, So you should have great relationships. yeah, You should meet without an agenda. yeah. Correct? Anything else? I mean, एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करेगा इधर कि ऐसा कोई एक या दो बंदे से बैंड नहीं चलता है. तो वो यू नीड टू इट इज़ द टीम वर्क दैट मेक्स द ड्रीम वर्क, बोलते हैं ना. तो कभी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं ज़्यादा क्रूशल है, तू कम है, ये वो वाला सीन ही नहीं होना चाहिए. और वो दैट शुड काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट इन द वे यू ट्रीट Each other. So that I feel like कि तुम्हारी अगर बैंड को अगर तुमको लंबे टाइम तक लेके जाना है तो that is very crucial. That's super true. I think that translates into like equal responsibility also. Yeah. I feel Yeah. like equal ownership and equal responsibility is something Yeah. that will help the band go far. Actually उन्होंने बहुत सही बात की. सेंस ऑफ इक्वालिटी तो है ही, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों सेम होना दोनों चाहिए. सेम होने चाहिए. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल. So, और ऐसा कुछ है कि जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. हाँ, ये स्टुअर्ट ने बोला था. Ideas are not bad. I mean, sorry. People are not. People are not bad. Yeah. Right? They have good ideas, they have bad ideas. That doesn't make the person good or bad. Correct.
And if you separate that from like the person that's giving you the idea, then you start to like develop a slightly more evolved thinking. कि True. मतलब ये आदमी ने मुझे खराब आइडिया दिया, मगर ये खराब आदमी नहीं है, हाँ, आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं idea है. खराब है. नहीं, बट आई थिंक ये जब ये इसने थॉट दी थी तो ये ऐसे पॉइंट पे दी थी जब आई थिंक हमें नहीं पता था कि हम इस चीज़ से स्ट्रगल कर सकते हैं कि नोशंस बन जाते हैं. अच्छा, इस आदमी ने ये थॉट दिया है, उस आदमी ने वो थॉट दिया है, और आप जब तक आपने इस थॉट के साथ डील नहीं किया है कि आदमी सेपरेट है और थॉट सेपरेट है, तो वो होता क्या है कि वो बिल्डअप होता रहता है. इट्स वेरी ईजी. हम लोग किसी भी सेटिंग में होते हैं ना, तो ये बहुत ईजी हो जाता है कि एक सॉर्ट ऑफ प्री कंसीव्ड नोशन बन जाता है किसी के बारे में. दिस गाय ना, आई एम नॉट श्योर इफ ही वुड गिव यू अ गुड आइडिया, बट मे बी ही विल द नेक्स्ट टाइम. True. But I think we were delving with the same sort of like a situation जहाँ पर ये preconceived notions बन रहे थे, and I think I was guilty of it. When he said, how about we separate the person from the idea? I think this was some 2016, 2017. And it made a lot of sense. And I think उस moment पे, और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके आसपास जो लोग हैं जिनको आप अपने जैसा मानते हो, अपना भाई मानते हो, वो आपको ये बात बता दें, राइट, कि यहाँ आपकी सोच गलत है और ये आप अगर इस तरीके से सोचोगे तो शायद बेहतर होगा. आई थिंक वो हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, अपनेपन की बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं. दिस बिकम्स द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट. ट्रू. एक्चुअली इसका हिंदी में एग्जैक्टली सेम नहीं, बट बहुत सिमिलर एनाटॉमी है कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, तो बीमारी से लड़ना होता है, बीमार से नहीं. करेक्ट यू हैव टू डील विद द प्रॉब्लम, नॉट द पर्सन. करेक्ट. सो That's very true. Stealing that. और इनफैक्ट हम ऑफलाइन बात कर रहे थे आपके आने से पहले कि बैंड चलते क्यों नहीं है. आप लोग उन कुछ चुनिंदा बैंड में से एक हो जो किसी भी इंसान को ऊपर नीचे ट्रीट नहीं करते हैं. इन योर प्रमोशंस, इन योर पोस्टर्स, इन योर डिज़ाइन, इन पेमेंट्स, इन ऑल ऑफ दैट थिंग. सो दैट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ इक्वालिटी इन द रियल सेंस. और मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत कम बैंड्स हैं, और जो भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे या देख रहे हैं, अगर उनको ये समझ में आएगा तो इट विल बी ईजियर फॉर देम टू form a band or continue a band for long. Also, any artist or any band, there are certain moments which defines them and which makes them who they are. Those moments can be good, bad, funny, embarrassing, can be any kind of moments. What were those moments that defines the Yellow Diary? आई थिंक एक बहुत ही अमेजिंग चेक पॉइंट बना था हमारी लाइफ में. हम लोगों को आई थिंक 2018 में आई रिमेंबर NH7 हो रहा था, और हम लोगों ने सिर्फ बात करी थी, और उस टाइम पे NH7 वाज वन ऑफ द बिगेस्ट, अभी भी है. अभी भी है. हम लोगों ने सिर्फ ये इस बारे में बात करी थी कि एक दिन वहाँ पे परफॉर्म करना है, अच्छे एक स्लॉट पे परफॉर्म करने को मिलेगा. आई थिंक स्टू भी किसी के साथ परफॉर्म कर रहा था वहाँ पे उस साल. हाँ, मैली के साथ. हाँ, और साहिल भी परफॉर्म कर रहा था, आई थिंक पैराफोनिक्स के साथ और एपेकोस के साथ में. तो ये लोग परफॉर्म कर रहे थे, और मेरे को बड़ा ऐसा फील हो रहा था कि यार मुझे भी जाना है, मुझे भी परफॉर्म करना है. NH7 आई मीन इंडी आर्टिस्ट का काइंड ऑफ ड्रीम होता है. तो लकीली उस टाइम पे हमें एक अपॉर्चुनिटी आई कि देयर इज अनदर प्लेस पुणे में उस वीकेंड पे जब NH7 हो रहा है, तो यूजुअली ब्रंच के लिए लोग वहां जाएंगे. यू परफॉर्म देयर, द प्लेस वांट्स यू टू कम एंड परफॉर्म. तो हमने बोला ठीक है. तो आई मीन ज़्यादातर जो हमारे तरीके का म्यूजिक लोग सुनते हैं वो वहाँ पर होंगे. तो अगर आप फेस्टिवल में प्ले नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी ऐसी जगह पे प्ले कर रहे हो जहाँ पर फेस्टिवल गोअर्स आएंगे, तो बात हो गई. तो हमने वहाँ परफॉर्म, अब हमने उनको येस बोल दिया था, बट फॉर सम रीजन एक हफ्ता पहले, 5-6 दिन पहले NH7 पे एक स्लॉट ओपन हो गया और उन्होंने हमें बुलाया. आई थिंक साहिल वाज लीडिंग दैट कॉन्वर्जेशन, और वो स्लॉट था रात को 8 बजे का. अब हमने इस गिग को हाँ बोला हुआ है जो दोपहर को 2 बजे स्टार्ट हो रहा है, और 8 बजे नहीं 3 बजे ये स्टार्ट हुआ, और उसके बाद 8 बजे वो स्टार्ट हो रहा था, 7:30 बजे वो स्टार्ट हो रहा था. अब सब सोच रहे थे कि क्या करना है, मतलब सपने बड़े होते हैं. अब आप एक जगह परफॉर्म कर रहे थे एज अ कॉम्प्रोमाइज कि चल ये नहीं हम ये करेंगे, इवन दो वी लव द प्लेस, पर ये था कि चल NH7 नहीं कर पा रहे तो ये तो करेंगे चलो. अब दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे थे. आई थिंक द हाईलाइट
of this whole scenario was हमने पहले ये gig perform किया and it was beautiful because पूरी जगह पे everybody was singing with us and you know it made us very happy and then हम कैसे कैसे तो पहुंचे NH7 grounds पे और जैसे ही हम वहाँ पहुंचे तो हम स्टेज पे थे इन द सेंस कि साउंड लाइन चेक शुरू हो गया था और बिकॉज हम भाग रहे थे हमें रियलाइज नहीं हुआ कभी कभी ऐसा होता है जब आपको वक्त मिलता है तो आप ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाते हो हम भाग रहे थे कुछ हुआ नहीं और स्टेज पे गए और लाइन चेक हुआ उसके बाद परफॉर्म करना शुरू किया उस दिन सुबह सुबह हम गए थे वहां पर साउंड चेक के लिए और उतना बड़ा स्टेज मैंने जिंदगी में हम सब ने शायद पहली बार देखा था बिग स्टेज मैन, थोड़ा बड़ा सीजनड है ना, थोड़ा सीजनड है तो Veteran. उसने देखा है बट मेरी जिंदगी में मैंने उतना बड़ा स्टेज नहीं मैं जब वहां गया मुझे लगा ये तो फुटबॉल फील्ड है stage. तो मेरे को याद है मैं इसको जाके बोला मैं कहा यार आज अगर सामने 500 लोग भी होंगे ना NH7 में आपको होता पता है कि हजारों लोग आते हैं तो घूमते फिरते जिनको नहीं कुछ पता है वो भी 500 लोग मिल जाते हैं आसपास तो उन्होंने कहा 500 लोग भी होंगे ना बहुत मजा आएगा बिकॉज आज तो हम इस स्टेज के लिए परफॉर्म करने वाले हैं लाइक आई just want to perform at this stage it's so big and beautiful उस दिन हमने दिन में वहां परफॉर्म किया और फिर रात में हम वहां पहुंचे और सडनली रियलाइज हुआ कि हमारे सामने कम से कम 4-5 हजार लोग खड़े थे वाओ और वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा क्राउड मैंने अपने सामने देखा था मतलब नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ वन बट सीइंग वन इन फ्रंट ऑफ मी Even season Stewart was like, hair was black then. Any which ways, good bases are like tigers. Only a few left. Whoa. देखो ज्यादा कॉम्प्लीमेंट अभी नहीं वो Yeah. dying breed. No, that's उस दिन आई थिंक आई रियलाइज कि हम अच्छे गिग्स या अच्छे प्लेटफॉर्म्स से ज्यादा अच्छी ऑडियंस के कितने भूखे हैं हमने एक जगह एक गिग परफॉर्म किया पता नहीं कैसे कैसे दूसरी जगह पे पहुंचे और वहां परफॉर्मेंस शुरू हुई एंड सडनली वी हैड अ लॉट ऑफ पीपल इन फ्रंट ऑफ अस बट ऐसा नहीं था कि हम थके हुए हैं एनर्जी यहाँ थी और यहाँ से यहाँ गई मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि मतलब ये हो कैसे रहा है इतनी एनर्जी आ कैसे रही है हमें आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम अगर आपने कभी हम लोगों को परफॉर्म करते हुए देखा हो तो we're monkeys we are just like jumping and like roaring with like all the energy suddenly उस दिन मेरे को पहली बार रियलाइज हुआ था कि मेरे में इतनी एनर्जी है एग्जीक्यूट करने के लिए क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और मेरे को जिंदगी में वो नाइट कभी नहीं भूलेगी बिकॉज आई रियलाइज्ड as a performer as an artist you make music you write music that's one thing उसकी satisfaction अलग है but when you go and your audiences kind of give you a hug almost nothing comes close to it and I think that becomes the highlight of my journey till now for me I will never forget that night and I mean of course उसके बाद कुछ बहुत खूबसूरत पल भी आए but that's But वो मेरे ख्याल से पहली बार एक sort of larger validation मिलता है कि आपने जो किया है वो Actually, सही है. That same night, in fact, Stuart's friend Surab, वो पीछे खड़ा था कंसोल के वहाँ पे, and he was watching the whole show, and वो हमें कह रहा था कि I've seen a lot of bands perform. He's saying और लोगों को नचाना easy है, but उनको रुलाना बहुत बड़ा मुश्किल है. Correct. He's saying और पीछे सब गाने सुन के रो रहे थे, and for us that was like we've reached people's hearts with our music. It was we never realized that before that we didn't know कि लोग सुन रहे गाने and कि क्या है, but then when we heard कि people were actually like tearing up, feeling emotional, feeling closer with one another on our music. I think that was like a big thing for us. That's a blissful feeling, I would say. For me, I feel like there was this one show we did in a loft. It was a lounge gig. Loft Delhi. Levi's No, Lounge. no, Levi's Lounge. Levi's Lounge. Oh. Levi's yeah, Lounge. Levi's It was a small venue in Lower Parel. They had like decided to put up a small thing, and we played it over there. 40 people, 50 people packed into one small room. No, no Was it bigger like than this this. size? no even more I think it's 70-80 people वाला scene था but the room was just There like was no room to breathe. This was the size of the room. And yeah. we were playing
and people were like here, you know. Sitting right here. Yeah, there was And this in one picture- guy who was headbanging and I felt his sweat. I was like, दूर जाके करना है यार, मेरे को इधर uncomfortable feel हो रहा है. Enjoy कर भाई तो, लेकिन थोड़ा And it wasn't the PA, the sound system wasn't that powerful or anything. It was like drums were like drums. Yeah. Yeah. Bass amp. It was guitar Sahil and amp. friends. Sahil and friends. But at one yellow point, drums. at one Sorry. point, we were drowned out by people singing back. Our song. For sure. And then for me, I was like goosebumps straight away. I was like, oh, Yeah. this is like it's gonna be special. You know, it's gonna be. It's like I just you just know when like something is just gonna blow up. Yeah. True. I think कभी-कभी लोगों को पता नहीं चलता कि उनके हाथों में कितनी पावर होती है when they come to see you as an audience. Audience बहुत powerful चीज है. वैसे भी अगर 70-80 लोग हैं मेरे ख्याल से सबकी आंखों में देख सकते हो आप. Yeah. Attention is Yeah. like Correct. you can more It's a very personal. intimate Very- setup. yeah. So, That feeling is the you, best. I mean, people can't fake the feelings, no? You can Yeah. see Yeah. yeah. they're enjoying. Yeah, little too for me, little too intimate. Tasted the salt. Nice. But Anything this which is you a remember very like good a point you said. defining moment for the band? For me, there was First a gig. Shut up, bro. That he wasn't a part of. Hey, yeah, very bad. No. There was a point We where need to talk about the first gig. no. I don't think we need to talk about it. Which was the first gig, Sahil? Yeah, which one? So हमारा पहला शो कॉटन प्रेस में था जहाँ पे हम लोग ने उसके सब हमारा वीडियो पहला- शूट किए थे जहाँ पे हमारा- एक सेकंड नहीं देखो शो क्या होता है लेट्स फर्स्ट डिफाइन द वर्ड लाइव शो जब परफॉर्मेंस का पैसा मिले. नहीं, तो ब्रो अपन लोग ने पिछले पहले 2 साल में शोज नहीं किए ब्रो वो हिसाब अरे चल मतलब जब लोग नहीं। अपनी चॉइस से हम लोग ने बेसिकली क्या किया था लाइव शो मतलब लाइव मतलब लाइव शो Live. मतलब शो. शो मतलब जब तुम लोग दिखा रहे हो लाइव हाँ दैट्स अ शो. हाँ तो वो दैट बाय दैट डेफिनेशन आई वाज देयर फॉर द फर्स्ट शो दिस इज हमारी सेटल्ड दो- इट इज दो ऑन रिकॉर्ड parallel- हम लोग पहले एक पर्सपेक्टिव सुनेंगे फिर दूसरा पर्सपेक्टिव So सुनेंगे. पहला Same. पर्सपेक्टिव ये नहीं, था. पहले उसको कंप्लीट कर अच्छा, देते हैं. नहीं सो फॉर मी द डिफाइनिंग पार्ट ऑफ द येलो डायरी वाज द एक फेज था जब भी हम लोग बिफोर आवर फर्स्ट शो आल्सो द फर्स्ट शो वाज देयर वाज अ फेज जहां पे हम लोग ने बहुत सारे प्रैक्टिसेस किए थे बिकॉज़ वी वर पुटिंग अ लाइव शो टुगेदर. तो उसका जो पहला जो लाइक द रिहर्सल दैट वी हैड डन जू में कोई एक था जैम रूम वहां पे हम लोग गए थे तभी तो कुछ भी नहीं था इक्विपमेंट भी कुछ नहीं था. हिमांशु और मैं ऐसे आई कांटेक्ट से क्लिक ट्रैक स्टार्ट कर रहे हो वहां से उसका आईपैड पे क्लिक करेगा मैं यहाँ से मेरा तो click track साहिल ने start एक करूंगा एप्लीकेशन डाउनलोड phone करी पे. थी मेट्रोनोम की. तो हाँ. साहिल इससे पूछ रहा था कि क्या बीपीएम है तो वो उस पे सेट करके अपने कान पे अलग से उसने एक और वो दोनों लगाया साथ वाला. में ट्रिगर किया और तो फिर वो ट्रैक दोनों और एक दूसरे क्लिक को साथ देखेंगे में ऐसे आई लॉक्स करेंगे और उसके और वो बाद वो 10 सेकंड के बाद मतलब या द क्लिक विल बी समवेयर द ट्रैक विल फ्रिक्शन ऑफ सेकंड तो गैप होगा ना. वही हाँ, so फ्रैक्शन नहीं मतलब बहुत ही ऑफ था. but still whenever we jammed the first time we played as a band together like I had met them I had spoken to them with, about Stuart and I have played together but पहली बार हम लोग 5 लोग जब भी साथ में मिलके first jam जो किया था ना I will never forget that in my life and for me that was like the thing where I knew के हाँ I can do this for the rest of my life. आई थिंक उस जैम से मेरे This को for me is like okay this is going to be a thing for me now. यार वो इतना फर्स्ट शो करे तो कुछ आया नहीं. हाँ वो निकल गया. नहीं ठीक है क्या? ठीक मतलब है किधर है वो? वही था तो उस जैम में पहले तो साहिल और We don't need to talk हिमांशु about साहिल और हिमांशु ऐसे जिस मोमेंट पे ऐसा होना कि 10 सेकंड निकल गए हैं और अभी भी वो लॉक्ड है मतलब टाइमिंग हिला नहीं है तो मतलब ये सोच रहे थे कि ओ बैंड बन गया सेट रेडी है बाहर लेके जाओ और सडनली दोनों मुड़ के स्टुअर्ट को देख रहे हो. स्टुअर्ट ऐसे देख रही है. हाँ, Stuart's first rehearsal नहीं, स्टुअर्ट कि क्या है ये क्या वो Stuart क्या है ये? तो स्टुअर्ट लाइक अबे ये टेक्नोलॉजी के नाम पे धब्बा क्या चल रहा है ये कम से And कम. he was like trying to be cool, तो he's like अच्छा कुछ नया कर रहे हो तुम. But actually in his head he's like क्या जिम्मेदारी पाल रखी है यार. जिम्मेदारी पाल रखी है. Yeah, but ओह यस. तो नहीं, वो फर्स्ट गिग का सिनेरियो ये था कि अब हमें रियलाइज हुआ कि चलो हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है पूरे साल बैठ के प्रैक्टिस ही कर रहे थे. अब प्रैक्टिस करने से थक गए और एक दूसरे को अब पता चल गया कौन क्या बजा रहा है. तो फिर हमने सोचा कि अब एक काम करते हैं बाहर ऐसे तो शोज आएंगे नहीं कि हम जाके बोले हमने बड़ी प्रैक्टिस कर ली है दिखाना पड़ेगा. तो एक वीडियो शूट करते हैं
इसके एक फ्रेंड ने बोला कि मैं हेल्प करता हूँ. So he came with a setup in a jam room that he was running with a few friends. Studio उसका press studio. हाँ, studio कम jam room. It was called Cotton Press Studios. और वहां पर सीन ये था कि हमने सोचा यार अगर हम वीडियो शूट ही कर रहे हैं, इट बी नाइस अगर हमारे पास कुछ ऑडियंस टाइप है, थोड़ा बहुत जो भी वहां पर आ जाए. तो हमने अपने सारे फ्रेंड्स को फोर्स करके वहां पे बुलाया. और जैसे ही वो एक मिनट, अरे भाई मेरा स्टोरी मैं बनाऊंगा ना, तू रुक ना. वो जैसे ही Was it like begging? No. We told them there'd be free snacks and alcohol. तो वो आ गया मतलब. That's like corrupting. Yeah, almost. और जैसे ही वो आए हमने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया. अब जा नहीं सकते तो सुनोगे. अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैं क्या मसाला डाल रहा है. Cancel. मसाला टेस्टी भी नहीं है. मेरे लिए For the record, this is in Hindi called Natya Rupantaran. हाँ, नाट्य रूपांतरण. रूपांतरण. Okay. Meaning? theatrical something, right? इसका मेरे को इंग्लिश एक्चुअली नहीं पता. It's like for the sake of showing it, थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम लेके थोड़ा सा उसको ट्विक किया है. Come on, liberty. बट सो एक्चुअली शो टेक्निकली नहीं था. नहीं था. एक शोकेस था. अपने But पोस्टर को डाल के बाहर basically बुलाया था. showcase. शोकेस. अबे With the शोकेस prank क्या होता videos है? बनाएंगे. ऑडियंस Videos है, बनाएंगे. शो प्ले कर रहे हैं, तो है ना सब लोग. हम वीडियो बना रहे थे वहाँ कौन से पे. शो में एक गाना 3 बार बना था? हाँ. और 3 बार वीडियो शूट करता है उसका. Points, bro. हाँ. Yes, points. तो फिर जब पहला शो मिला You ever हमें, come back to तो this उस point? टाइम अब ये हमने कर लिया था और इसका वीडियो बना के बाहर कुछ लोगों को YouTube सुनाया पर, जो हेल्प कर रहे थे. और इस टाइम के दौरान साहिल ने डिसाइड किया कि वो जा रहा है एम्स्टरडैम म्यूजिक और सीखने के लिए. He's like, guys, मैं जा रहा हूँ. तुम Seriously? मैं जा रहा हूँ. मैं रिप्लेसमेंट देके जा रहा हूँ. अच्छा ड्रमर है, पर जब मैं वापस आऊंगा तो मैं ही है. गाइस मैं ही है. मैं आएगा. तो अब ये गया और पीछे से शो आ गया. तो वो शो था हैबिटेट ट्यूनिंग फॉर ट्यूनिंग फोक. तब उसका नाम था ट्यूनिंग फोक जगह का. तो हम छोटी सी इतनी बड़ी जगह थी वो, और एक स्टूडियो उन्होंने छोटा सा सेटअप बनाया था जिसके अंदर ड्रम किट थी. तो ख्वाब एक रूम में बंद बेचारा ड्रम बजा रहा था और हम वो छोटे से स्टेज पे हम चारों फिट हुए थे. और वो ऐसा हमने शो किया. वहां पर और लोग आए थे, बाहर से भी लोग आए थे जिन्होंने खुद पैसे खर्चे थे. एंड होपफुली वो रोए नहीं थे पैसे खर्चने पे. और इसलिए हम उसको अपना पहला शो मानते हैं ना, क्योंकि लोगों ने टिकट खरीदा था वहां. ऐसे मानने से कुछ नहीं होता है. जो शो जो होता है वही फर्स्ट शो होता है. That's why Sahil is very touchy, क्योंकि वो कह रहा है कि नहीं फर्स्ट शो मैंने बजाया था, बट वी आर लाइक वो तो फर्स्ट शो था ही नहीं. वो शो केस था, वीडियो शूट था. So you were not the part of the original band. निकालो इसको. मैं जा रहा हूँ घर पे. That's the whole crux about, right? No. ऐसा नहीं, ऐसा Never नहीं. said it like Never that. said it. देखो हमारे मन में हमेशा साहिल था. His words, not us. साहिल You हमारे all मन में laughed था. way too hard on this. Like I must say. 1 second. हर्ष, तुम्हारा क्या बोलना है? एक्चुअली हर्ष यहाँ पर होता ना तो वो तब भी कुछ नहीं बोलता. दिस इज एक्चुअली गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैन. He doesn't speak much. He chooses to. He is a man of few words. Few words. He was at the show though, na? At the Habitat. No, that is a different show. That show I was playing, bro. अभी हर शो में से मत हटा मेरे को. सिर्फ एक शो नहीं था मैं. अच्छा ठीक है, अभी हम लोग वापस मुद्दे पे चलते हैं. मुद्दे पे. और बहुत मजा आया. Trust me, this is gonna be on YouTube. Oh my God. And इसका स्पेशल क्लिप काट के भी अलग से लगाएंगे. बनता है. लाओ. Shout out to Kwab. Shout out to Yeah, Kwab. Lots Thank of you so love. much, bro. Okay, so if I have to ask you, each one of you, from this entire journey, one learning which you think has stayed with you and is going to stay for a longer time. It can be a learning about personal life or your professional career or anything. To keep evolving in your craft, but staying true to yourself at the same time. क्योंकि मैंने ये पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है. when you get sometimes inspired by other musicians, it's great. When you start trying to become like them, it's not. Because I feel like what's the most original thing about you, मतलब आपकी जो सोच है चीज़ों के बारे में, that's the most original thing. And if you apply that to your art, you're going to be the most original artist out there. But at the same time, if you keep evolving your craft to like move with the times,
but stay true to yourself. It's like you start moving towards a place where expressing yourself becomes like very easy वाह, and very true, very honest. ग्रेट ये मैं Anybody सीख लिया else? अभी. बढ़िया है. नोट मेरा खोल के बैठ तू नोट Same, खोल के बैठ. same. आई थिंक एक बहुत अमेजिंग चीज वक्त के साथ समझ में आई, एटलीस्ट फॉर इन टर्म्स ऑफ लाइक राइटिंग एंड यू नो क्रिएटिंग. जब आप बचपन तो नहीं बोलूंगा, बट जब एमेच्योर होते हो, जब आप नया किसी चीज को आप अटेम्प्ट कर रहे होते हो, तो दी आइडिया, और स्पेशली जब आप यंग होते हो, तो दी आइडिया इज कि कितना कॉम्प्लेक्स, ऑलमोस्ट टू द आइडिया ऑफ लाइक शोइंग ऑफ कि मैं ये लिख सकता हूँ या मैं ये सोच रहा हूँ, यू नो. सो यू स्टार्ट राइटिंग कॉम्प्लेक्स स्टफ, मेक कॉम्प्लेक्स मेलोडीज Yeah. विद टाइम. और ये मेरे को बहुत पहले से ये जो मैं बात कहने वाला हूँ मुझे पता थी, लेकिन उसको रियलाइज मैंने टाइम में किया है. आई थिंक आई रेड समवेयर, आई सॉ समबडी स्पीक अबाउट दिस. They said Einstein said that when you, no matter who you are, no matter how big a scientist you are, if you can explain your idea to a 6-year-old kid, that's when you know the idea, right? ये सुनना बड़ा फैंसी है कि ओ यू नो उसने Correct. क्या बात की है कि कितना Correct. अच्छे से आपको पता होगा तो आपने सिखा दिया. लेकिन जब आप इस बात को वक्त के साथ समझते हो तो आपको रियलाइज होता है कि सिर्फ he didn't mean कि आप आइडिया कितने अच्छे से समझते हो. What he meant was कि कितने भी कॉम्प्लेक्स आइडिया को जब आप ब्रेक डाउन करते हो, जब आप एक्चुअल समझने जाते हो, तो आप आइडिया नहीं समझते, उसका सोर्स समझते हो. राइट आपका एक थॉट है, आप इमोशंस बता रहे हो, और आज मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, या आज मैं बहुत गुस्सा हूँ. पर आप समझने अगर जाओगे कि आप ये कहाँ से, व्हाट इज द रीजन फॉर योर एंगर, व्हाट आर यू फीलिंग, राइट. जब उस चीज की अच्छी समझ आ जाती है ना, तो आप बहुत सिंपल शब्दों में उस बात को समझा पाते हो कि आज मैं गुस्सा हूं, मेरे को ऐसा फील हो रहा है, मेरे को वैसा फील हो रहा है. लेकिन सडनली मेरे को रियलाइज हो गया कि अच्छा, मेरा गुस्से का रीजन ये है कि आई फॉट विद somebody, my argument was not heard properly, right? अब मुझे ये पता है कि इस वजह से I am feeling agitated the whole day. So now it's easy for me to break it down for myself and break it down for other people. So now at this point where when we go into a studio, writing easy हो गई है इस वजह से नहीं कि ओ मैंने सोचा और मेरे को समझ में आता है कि अब जो मैं सोच रहा हूँ वो अच्छे से समझ में आता है तो मैं लिख सकता हूँ. बट अब वो ये समझ में आ गया कि जो मेरे को फील हो रहा है उसे मैं कैसे एक्सप्रेस करता हूँ, या वो मुझे कैसे लगता है. दुनिया को सेम चीज बहुत अलग अलग तरीके से फील हो सकती है, पर मुझे पता है कि वो क्या और कैसे है. इस वजह से आई कैन राइट इट इन अ फार सिंपलर फॉर्म, एंड दैट अलाउज एनीबडी टू टू अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड इट, टू मेक इट देयर ओन. वो बोलते हैं ना कि सिंपल चीजें लिखना सबसे ज्यादा मुश्किल है. सबसे ज्यादा मुश्किल है. यू नो सिंपल मेलोडीज, सिंपल सॉन्ग राइटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन. अब गाइज हम लोग ने ना सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था 1-2 दिन पहले, तो बहुत लोगों ने सवाल भेजे, तो हम लोग ऑडियंस के थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं, है ना, बिकॉज समथिंग विच दे वांट टू हियर और दे वांट टू अंडरस्टैंड. तो आज द गेस्ट का पहला सवाल, माय क्वेश्चन इज फॉर हिमांशु सर. Then again, sir, how was your experience working with Pritam Da and his team for songs like O Mahi, Kesariya, Vekamliya, O Bedardiya, and how is it different from working as in a band? Very good question. Wow. Okay. It was a great experience, to be honest. I mean, very smooth experience, and बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा होता है वहाँ पे, ऐसे काम करेंगे तो ये स्ट्रेसफुल रहेगा ये वो, बट मेरे एक्सपीरियंस में इट्स बिन वेरी स्मूथ. आई फील लाइक प्रीतम दा इज वेरी श्योर ऑफ व्हाट ही लाइक्स एंड डजंट लाइक. उनका ही डजंट गेट इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ द प्रोडक्शन. If overall the emotion and the vibe is working for him, he will say he trusts your judgment on it. So it was a very smooth process, very good process, but it's a very different process from the band. मतलब वो दो अलग ही दुनिया है, to be honest, क्योंकि यहाँ पे आपको एक कंपोज मेलोडी मिल रही है जो ऑलरेडी एक सिचुएशन पे बैठा हुआ है, और आप उसको यू आर ट्राइंग टू सर्विस समवन एल्सेस विजन. वो प्रीतम सर का एक विजन है,
वो मुझे एक ब्रीफ देंगे कि अच्छा ये हैप्पी है, रोमांटिक है, या ये न्यूआंस है, थोड़ा मैच्योर कपल है, इनका ऐसा है, और वो थॉट प्रोसेस लेके मैं मेलोडी पे आई विल ट्राई टू प्रोजेक्ट माय आइडियाज ऑन इट. बट इन दिस केस बहुत अलग अलग वाइब है. लाइक ही सेड अर्लियर कि हम लोग मिलते ही हैं सिर्फ मिलने के लिए, और हम लोग बैठते हैं, और जो भी आपके दिन में हुआ है, आपके साल में हुआ है, व्हाटएवर हैपेंड यू लास्ट मंथ, ऑल दीज थिंग्स आर ब्रूइंग इन योर माइंड कॉन्स्टेंटली, राइट? व्हाटएवर you've been through, एंड वी कीप शेयरिंग विद ईच अदर. तो एक एनर्जी एक रूम में कॉन्स्टेंटली बनी रहती है. एंड व्हेन समवन प्लेज समथिंग, इट ट्रिगर्स वन ऑफ दीज फीलिंग्स फॉर समवन. फॉर राजन इट ट्रिगर्स अ मेमोरी और समथिंग यू थॉट अबाउट सम टाइम बैक. ही विल से कि अरे मेरे को इस चीज़ की याद आ रही है, ओ इससे इसको कुछ याद आएगा. देयर इज अ कॉन्वर्सेशन, एंड दैट कॉन्वर्सेशन बिकम्स एन एनर्जी इन द रूम. एंड देन ऑल वी आर डूइंग इज, आई मीन आई ऑलवेज बिलीव दिस, हम लोग कुछ बना नहीं रहे, हम लोग बस चैनल कर रहे हैं कहीं से. हमारा ये है कि बस एनर्जी बना रहे रूम में, कुछ कहीं और जाके कुछ तोड़ो मत, जस्ट बी इन द एनर्जी, चिल एंड कीप मेकिंग म्यूजिक. और वो कुछ एक अलग ही कॉन्वर्सेशन है रूम में, जो अगर इनमें से एक भी जन अलग होता तो वो गाना अलग होता था. It's just the blend of energies which make the song what it is. So in that way, it's a very different experience because there's no situation, there's nothing. It's just coming out of nothing. तो बिकॉज यू मेंशन दैट, एक एडिशनल सवाल पूछता हूँ कि हर आदमी का गाना बनाने का प्रोसेस अलग होता है. द येलो डायरी का गाना बनाने का प्रोसेस क्या है? आप लोग गाने बनाते कैसे हो? सर ये बहुत एम्बिगुअस है क्योंकि हर गाना अपने आप में एक प्रोसेस है. कभी कभार ऐसा होता है कि हिमांशु कुछ कीबोर्ड पे प्ले कर रहा है, या हर्ष गिटार पे कुछ स्ट्रम कर रहा है, कभी कभी स्टुअर्ट गिटार पे कुछ स्ट्रम कर रहा होता है या कीज पे प्ले कर रहा होता है. आई रिमेंबर वी रोट वन सॉन्ग व्हेन साहिल वाज प्लेइंग समथिंग ऑन एस्पिरी, Yeah. और दैट ग्रूव वाज रिमाइंडिंग मी ऑफ समथिंग, एंड देन उस पे मेरे को कुछ मेलोडी का कुछ थॉट आ रहा था. एंड वी, बट द आइडिया इन द रूम इस पूरे पूरे सीन में जो कांस्टेंट, लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, थ्रेड, इसकी इमोशन सब लैच ऑन करते हैं, एंड देन एवरी पर्सन बिकम्स अ लेयर. Instead of like trying to find that one thing, we all start expressing in our own language. So if I am working on the melody, Sahil would express through, you know, the groove. Stu would express through the bass. He would speak through the keys and other, you know, parts of the production. तो the idea is कि एक के बाद एक we work towards the emotion. वो layer पे layer बनती है. How did we explain it? Cake. Like a cake, right? To make It's different like a layers true of the cake. collaboration. That's how actually It's most very of the great music in the world Yeah. is made. Yeah. It's very simultaneous. It's not like पहले हम लोग गाना लिख लेते हैं, फिर हम लोग अरेंज करेंगे. It's वो साथ में ही बन जाता है. और ऑल्सो आप लोग जैसे जब गाना तैयार हो जाता है, सो आप लोगों की कोई ऐसी लोग हैं जिनको आप जनरली सुनाते हो, Yeah, पहले sure. सैंपल करते हो? 100%, Yeah. yeah. For All our me, better halves. Yeah. Yeah. My wife like has to approve like everything. Hmm. She has great ear for music. तो वो बोलेगी कि यार वो डुश डुश बहुत डिस्टर्ब हो रहा है यार, तो मेरे को समझ आता है कि अच्छा मतलब Correct. सिंबल That's सिंबल लाउड है the कुछ. right analogy actually for an audience to Yeah. understand. Yeah. So obviously with a pinch of salt, there are songs which she has not liked, but I have really believed in, then that's what it is. But एक टेस्टर वो तो रहता ही है. Hmm. For Same. all of us. Yeah, No, I think for me it's also. pretty much the same. मैं मेरी गर्लफ्रेंड के लिए प्ले करता हूँ, और अगर 5 मिनट के बाद वो गाना गा रही है, मतलब उसके माइंड में वो धुन बैठ गया है. हाँ. So then for me that's like the litmus test कि हाँ चल. See, it might be a cliche question, आप लोगों ने जवाब दिया होगा, फिर भी just for the sake of knowledge for everybody, कि creative differences तो बहुत सारा होता है. जब 5 लोगों का बैंड है तो कभी कोई एक बंदा बोलेगा यार ये चीज बहुत अच्छी लग रही है, तो चलो नहीं यार ये अच्छी नहीं लग रही है. तो ऐसे डिफरेंसेस तो रेगुलरली होते हैं इन द Absolutely. प्रोसेस. हाउ डू यू हैंडल दोस सिचुएशंस? It's the like what Stuart had said, like you separate the idea from the person itself firstly. And the next step is कि at the end of the day we all have a common goal कि गाना सही होना चाहिए. वो गाने के फील के लिए, गाने के मूड के लिए कौन सी चीज ज्यादा सही बैठ रही है. And I feel like over a period of time you also start to trust each other a lot more. So मेरे को ये नहीं लगा कि अगर मैंने कोई चीज ऐसे रेकमेंड की है गाने के लिए और स्टुअर्ट ने कुछ बोला है, अगर स्टुअर्ट की चीज सेट हो रही है, आई स्टिल हैव फुल फेथ दैट द सॉन्ग इज गोइंग टू वर्क बेस्ड ऑन हिज आइडिया आल्सो. लाइक इट्स नॉट दैट द सॉन्ग इज गोइंग टू सफर लाइक दैट. सो it's about like a little bit of letting go of what you want to do and try to कि तुम उसके पर्सपेक्टिव से देखो कि वो गाने में कौन सा कलर ऐड करने का ट्राई कर रहा है वो, and somehow you manage to build something. I think इसमें एक चीज बहुत ज्यादा ऐड करती है, वो है better understanding of each other. Correct. So, I mean, just using a song that we've been writing recently,
the song called Akda. It's going to be out soon. Akda. Oh, plug. Yeah, Akda. Akda. Akda, what does it mean? It's an Urdu word. It means clues. You use Urdu words always for your... Not always. Like your lyrics also has a lot of Urdu. So I mean, I very recently I was trying to like figure out ये मेरा जो diction है और जो words that I very easily use, ये why is it like this? And my mother told me that ancestors have come from Pakistan, Pakistan, so yeah, it's a very blended in the conversation kind of vibe. वो पर genes में अकदा ही नहीं होता पता था है। मुझे. Honestly, बहुत सारे words ऐसे भी होते हैं जो ढूंढने से मिलते हैं जिनका meaning kind of envelopes the song really well. So Akda का वो scene था क्योंकि वो गाना is not like about clues. The song is about like getting reminded of somebody with things that you're surrounded by, right? जैसे आप अपने grandparents के room में जाओ तो तकिए से उनकी खुशबू आती है. Something like Correct. that. So that. You got a hint. Correct. But Akda as a word I found very like poetic. So you So say. writing Like a the song. proper plugin now. Yeah. So Yeah. we're writing the song, okay, and we started writing it ages ago, okay, and it's been flooded with ideas. Like everybody has like given 100 ideas, Yeah. and it's full of ideas, right? And now when we're releasing it, we've come to the point where it's like, whoa, there's too many ideas here, you know. So and all of us recognize that. Correct. Like it needs to be less. Correct. So when you come to a point Yeah. where we all sit down together and we're like, cancel. हाँ. Cancel. ओ हर्ष को मालूम नहीं है पर This उसका is- गिटार पार्ट म्यूट हो गया है. I guess you'll find out in the podcast. You'll find out in the podcast. उसके गिटार पार्ट थोड़े म्यूट हो गए. But But he'll be fine with it, right? I We think just we should follow on. speak to him, no? No, but the point that he just made is exactly what I was trying to tell you with like over the years you've tried to understand how you are functioning and simplifying it. अब पता है आपने गाना सुन लिया है, क्या वर्क नहीं कर रहा ये समझना होता है. Correct. तो वो chaos कहाँ आ रहा है या क्या नहीं बैठ रहा है या और कभी कभी ऐसा होता है कि हर चीज अगर आपने जो डाली हुई है वो आपने दिल से डाली है, अच्छा कुछ सोच के ही डाला है, तो आपको नहीं समझ में आता कि क्या वर्क नहीं कर रहा, बिकॉज आपके हिसाब से हर चीज बहुत सही है. तो सोर्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो ओवर द इयर्स आई थिंक वी काइंड ऑफ गॉटन वेरी गुड Yeah, एट there are- I think experience से आपको आता है कि क्या नहीं करना जरूरी है. Mainly, I जैसे think स्टुअर्ट in हमेशा a बोलता very है. real world way actually how we have come across this is we try all the ideas. हाँ. Mainly ये था actually कि Yeah. किसी का भी आइडिया है, ऐसा नहीं कि नहीं ब्रो नहीं खराब आइडिया है. हाँ. हाँ सेंसर किया मैंने. नई जिम्मेदार. हाँ सिर्फ नहीं we'll try the idea. डाल के फिर सुन के देखते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो we'll say कि नहीं पसंद आया, then ऐसा नहीं होगा कि यार ये लोग ने मना कर दिया. There's nothing like that. It's like तीन लोग बोल रहे हैं अच्छा नहीं है तो मतलब ठीक है. शायद नहीं पॉडकास्ट होगा. पे एक और चीज पहली बार करते हैं. सो लेट्स मेक दिस इज हर्षवर्धन. तो मैं पूछता हूँ कि कौन क्या है, आप लोग इशारा करके बताना. सबसे फनीएस्ट कौन है? नहीं, यू कांट यूज 2 fingers. I can't use 2 fingers. Who is the weirdest? Define weird. Weird is weird. जो whoever is not, whoever missed it. जो भी डिफिकल्ट लग रहा है ना इधर पॉइंट कर जो भी difficult लग रहा है उसको. Who's confused? Most confused. About what? You, when I give you the previous answer. You have that impact on people. I do. No, I'm kidding. Confused. Confused in what sense? Like confusion तो बड़ी तरीके की होती है. किसी भी तरीके की सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में होता है. मैं क्या, मेरी शादी हो गई भाई, अब इससे ज्यादा मैं कंफ्यूजन नहीं मिटा सकता अपनी लाइफ में. हर्ष है ना कंफ्यूज. हर्ष है भाई. I'm pointing, bro. अरे चल कोई नहीं. I go with ये Harsh. गलत है. हर्ष तुम्हारे साथ गलत हो रहा है. Nah, I am clear, bro. Who's straight on the point? Stuart. Bro, you're really a tiger. Okay. Who's the business guy who understands the business most? साइचा. Thanks. स्टॉक मार्केट के अपडेट्स वहीं से आते हैं हमारे तो. किसको attention सबसे ज्यादा पसंद है? The only single fellow in the 100%. band Bro, now. tell them what happened at the I Jaipur would like game. to agree, but like yeah. Bro. Yeah? Little bit you also actually. Attention. चल तू बोलता है Case in point. mind it. ठीक है. ठीक है, अगला सवाल लेते हैं अभी. सो उसी लिस्ट में ना काफी सारे सवाल पूछे हैं. कोई आपका हार्डकोर फैन है? ओके. सो दूसरा सवाल है, एक इंटरव्यू में आपने मेंशन किया था कि आप सेल्फ टॉट हो और आपने सब यूट्यूब से सीखा है. तो कौन से यूट्यूब चैनल रिकमेंड करोगे सीखने के लिए?
ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है बिकॉज मैं अब तक यूट्यूब पे ढूंढते रहता हूँ बट मैं चैनल्स पे नहीं जाता हूँ आई गो बाय द वीडियो टाइटल्स मतलब मैं सोच आई सर्च के मुझे कुछ अगर सीखना हो मैं सर्च करूँगा और मैं उस पर 4-5 वीडियो देखूंगा और मुझे जहाँ लगता है कि सारे हाँ ये पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे हाँ आपको। और मुझे जहाँ लगता है कि हाँ ये कुछ समझ में आ रहा है ये मैं अडेप्ट कर पा रहा हूँ मैं वहाँ पे ट्रस्ट कर लूँगा बट ऐसे चैनल्स नहीं है बिकॉज आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट इक्विपमेंट आई एम अंडरस्टैंड अबाउट साउंड अबाउट म्यूजिक थ्योरी एंड डिफरेंट थिंग्स सो हर बहुत सारे चैनल्स हैं अब तो मैं जब सीख रहा था तो बहुत टाइम हो गया अभी भी चालू है यूट्यूब पे ही सीखना तो जस्ट सर्च फॉर व्हाट यू वांट टू लर्न आप how do you make sound so wide and stereo? Some tricks if you can suggest, and want some more in-depth breakdowns on your YouTube channel. तो एक तो सजेशन है कि आप अपने YouTube चैनल पे और ब्रेकडाउन दे सकते हो क्या, और अपनी वाइड और स्टीरियो साउंड आप कैसे बनाते हो, कोई ट्रिक्स है सजेस्ट कर सकते हो? Definitely. I think with stereo width and mostly anything in music production comes out through contrast. Context and contrast are the biggest things of music production. So you will only feel कि कुछ बहुत wide है अगर कुछ चीज़ें बहुत narrow है. तो आप selected चीज़ों को narrow रखो, कुछ चीज़ों को wide रखो, वो automatically जो चीज़ इतनी wide है वो इतनी wide लगेगी. And otherwise make sure कि sound selection is the most important thing. You have to choose a sound that has difference in information left and right so it feels wider than it is. अगर आप same sound left right में डालोगे तो वो बीच में ही आएगा वो actually. तो साउंड सिलेक्शन एंड कॉन्ट्रास्ट इन द मिक्स कुछ चीज़ें बीच में होंगे तो वो जो साइड में चीज़ें वो और खुल के आएंगी बेसिकली Some contact libraries which you use the most. ओह So specific. yeah very specific there's this the guitar stuff is great like the Sunburst Deluxe and the Native Instrument picked acoustic guitar nylon stuff I like to use there's the Ethno World for other stuff but most recently one of my favorite ones is Jacob Collier ने एक choir का library निकाला है जो उसके पूरे world tour में उसने जो किया है he's recorded the audiences और उसके show में अगर आपने देखा हो I'm not sure but he makes people sing harmonies and ज़्यादातर उसके audience में musicians ही होते हैं so the choir sounds lovely और उसने country wise he's broken it down and he's released this for free on Contact it's a Contact library called Jacob Collier Choir where it's the clippings of all over the world, all it shows the audiences, and you can actually play the chords, you can do ahs, oohs, mms, and there's dynamics, and there's stomps and all sorts of things. So that's like my favorite library right now. ओके, सो आज द गेस्ट के अगले सवाल है आपके लिए नहीं है, ठीक है? फाइनली आप एक बैंड हो जिसने ओरिजिनल गाने परफॉर्म करना शुरू किया. यू ओनली परफॉर्म ओरिजिनल सॉन्ग्स इन द Yes. लाइव शो? ओके, सो हाउ डिड यू मेक स्पेस फॉर योरसेल्फ? आपने अपनी जगह कैसे बनाई? So you want to take that? I think by just saying no to playing. Yeah. I mean एक point था जहाँ पे हम लोग ने ऐसे decide किया था कि 60-40 cover set original songs का we'll play. But then मतलब हम लोग पांचों के बीच में तभी इतना ऐसा क्लियर थॉट था कि हम लोग को कवर बैंड नहीं बनना है क्योंकि एक बार वो गली में घुस गया ना तो फिर वो तो घुस गया उसके अंदर फिर यू विल गेट कॉल्ड फॉर दैट जस्ट दैट सो दैट्स व्हाई फॉर अस इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द गेट गो इटसेल्फ दैट एक चीज सेट रखते कि वी आर गोइंग टू बी एन ऑल ओरिजिनल बैंड एंड वी ऑल्सो फेस लॉट ऑफ इश्यूज इन द बिगनिंग क्योंकि क्या होता था कि हम लोग कोई शो प्ले करने जाते हैं हम लोग के 3 गाने सिर्फ बाहर है और हम लोग 90 मिनट का शो प्ले कर रहे हैं तो बाकी का पूरा 1 hour is just going to be songs that the audience has not heard. So it was a like in some ways it was a good thing कि हम लोग ऐसे try कर रहे हैं तो audience का क्या like what is the like the reaction that we get from them. But at the same time कभी कभी ऐसा भी होता था कि the audience didn't want to listen. They wanted to hear something that they have heard in the past. तो there was a lot of friction in the beginning years. But then जब भी हम लोग के सारे गाने बाहर हो गए and then now we are playing an all like a original set for like 1 hour and stuff so then now it's fine but have आप लोग to का say ड्यूरेशन no. अभी 1 घंटे का होता है शो का? 90 minutes 90 minutes. 90 minutes. एंड आप लोग हर तरीके के शोज करते हो? You don't do, you do corporate, private and all those shows? Yeah. I mean the music is going to be the same that we are going to play so But whoever the wants us, we setting would can go be and perform. We different performed at weddings also, but we've performed the same set. yeah the same set Superb. वैसा Superb. For Imanshu sir again, how do you bring a very unique sound in your music production when we talk about the band and Bollywood song as well? What has led you to become the top most music producer in India? And what's the secret behind the solid backing vocals that you design?
And by which of your produced song you got the Bollywood break? And what should a music producer post on social media How many questions? and is get this? socialized when he doesn't have a singer to sing? I think you'll have to break down all the questions like one by one. ताकि वो What was the last thing? What was the first thing? Okay, how do you bring a very unique sound in your music production in the band in Bollywood as well? That's the first question. Okay. I feel like it sounds funny and it sounds like, but the thing is not to overthink it, honestly. मेरा एक very frankly एक trust रहता है, like I said, in this energy that I feel from somewhere which I channel. मैं जब एक melody सुनता हूँ ना, I get some kind of thought or an idea, and it also often comes when I sit at the piano, और if I think of a groove, जो भी मतलब मेलोडी पर डिपेंडेंट है. कभी कभी मन में ग्रूव आता है पहले वाले, कभी कभी कॉर्ड्स आते हैं, जो भी वो गट बोल रहा है, कीप फॉलोइंग इट, एंड देन आई डिस्कवर द सॉन्ग साउंड अलॉन्ग द वे. आई वुड से द कॉन्शियस एफर्ट इसकी मतलब जो 1000 बार सुन चुके हैं वो ना करें. और खुद मैंने अगर से 2 गानों 3 गानों में वो साउंड यूज कर चुका हूँ मैं, इवन इफ दे आर नॉट रिलीज्ड, आई विल स्टॉप यूजिंग दैट साउंड, बिकॉज आई एम लाइक वो कभी ना कभी 3 गाने बाहर आएंगे और उसमें वो सिमिलर साउंड रहेगा. सो आई विल ट्राई टू चेंज इट. अगर इवन एट इट्स कोर फाउंडेशनली इट्स डूइंग द सेम थिंग, इट्स द सेम साउंड, लेकिन उसमें कुछ अलग होगा, उसका टोन थोड़ा चेंज करूंगा, समथिंग, सो दैट आई कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस साउंड डिफरेंटली, not get bored. So I think the reason a unique sound comes is because I am my first check of boredom. Like वो song से मुझे बोर नहीं होना चाहिए. I should enjoy it. क्योंकि मैं मेरा म्यूजिक रोज सुन रहा हूँ, तो मुझे मजा आ रहा है, कुछ अलग लग रहा है, then I go with it. But I at the time I'm making it, I don't think कि कुछ नया sound लेके आते, कुछ unique करते. It's just trying to do something different all the time, basically. Second is, what should a music producer post on social media and get socialized when he doesn't have a singer to sing? I am like the worst person to ask this question to. I am like, I think if you want advice on social media, I am the wrong person to ask. So like, Who is in the band is a social media guy? No. No? No So one actually. then, Stu if, has if like he's a not, knack then for no it. one is. Stu has a knack for it, but like, I No, don't know, but bro, you had posted a beat, na? Like I kind of remember during I mean, lockdown, like okay, I can give you the hygienic answer, Yeah. which I feel like करना चाहिए. I don't think necessary है कि vocalist होना चाहिए. I think अगर आप producer हो और आप you're making beats or making clips of music, तो just put it out. In fact, I feel like right now the thing which people love the most कि वो देखे कि beat कैसे बन रहा है. You know, लोगों को ये बहुत पसंद आता है देखना कि अच्छा मैंने पहले किक डाला है, फिर स्नेयर डाला है, फिर उस पर ये किया, या तो कुछ लूप कहीं से रिकॉर्ड करके उसको कैसे ट्वीक करके मैंने उसका बीट बनाया. पीपल लव टू सी दैट. तो अगर आपके पास वो पेशेंस और टाइम है वो करने को, then that's a great way to put your इसलिए music out. पूछा भी है कि what's the secret behind the solid backing vocals that you design? Again, there's no secret. मेरा ये भी नहीं है जब मैं बैकिंग वोकल्स कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं हार्मनी में ये 3rd, 5th गाऊंगा, 7th गाऊंगा, 9th. I never think like that. My ways of thinking of harmonies are very like, I don't know, like fugue-esque, you know. I'm thinking of melodies basically. Like I'm thinking more in terms के ये मेलोडी के साथ ये मेलोडी अच्छा इमोशनली अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप एक मेलोडी को 1000 तरीके से हार्मोनाइज कर सकते हो, लेकिन वो जो इमोशन में कौन सा मेलोडी बैठ रहा है, according to that I go, and then I just layer like up and layer down till I feel like I'm satisfied with how it's sounding, और कुछ clash ना हो बस. But as long as जब आप साथ में सुनो वो एक इमोशन में ऐड हो रहा है ना, that's my way of doing it. There's nothing technical about it at all. Fantastic. For the whole band, while making a song, how do you select which song will have a keyboard solo, guitar solo, bass or drum solos? How to solve all creative differences? We've discussed that. The first question, if you can answer. ड्रम सोलो तो अपन डालते नहीं है. क्या बात कर रहा है? नहीं I मस्ती. feel like Conmera has a drum. हाँ, exactly. Yeah, but now we don't Good play point. that song. तो अपन लोग ड्रम सोलो डाल के गाना अगर डिलीट कर देते हो तो फिर क्या है कि- नहीं मस्ती. Yeah, बहुत साल बजाया है. नहीं, This is how somebody raises the difference. Yeah. Let's see how they solve it. Yeah. Love you, bro. Thank you. This is how you retain a relationship. No, I feel. How do you? No, wait, decide? we'll make you wait for the next song. It's a flow thing. It's definitely It's a flow thing. Like sometimes it's like कि यहाँ पे गिटार सोलो अच्छा लगेगा तो चलो ठीक है. So the float never travels towards the drum solo. Okay. Live it does. Live. Live? Very frankly, I
hate drum solos. I think they. Jhoota. I swear. I एक swear. No, नंबर का trust me. झूठा। I want this to be on the record. I इसको hate drum solos. when I'm we not a big perform, fan of. इसको कभी अपना सोलो प्ले करते हुए देखो. You will never believe this statement. No, but trust me, I'm not a big fan of like a drum solo as such. To me, it doesn't work, and I've not been the soloist kind of a guy as such. I like the whole concept of accompaniment, like the fact I that feel like how- none of us are soloists besides Yeah. Harsh actually. yeah. Yeah. So Because he's guitar not solo- here. I mean. No, but we have the most guitar this thing only in the Yeah, most in- guitar solos. yeah, most guitar solos. Okay, this is for Rajan sir. Oh, finally. You write lyrics for the band, and so how do you prepare yourself vocabulary? Got देखो it. मैं sentiment समझ गया. For the songs. And Rajan sir is an amazing singer, but we don't hear him in the backing vocals. So when will we hear him? First of all, backing vocals में मेरे vocals ज़्यादा नहीं जमते because my vocal texture has this like it protrudes very easily. So वो backing vocals need to be like a bedding for the lead vocal. तो इस वजह से I mean Himanshu described it really well to me way early in my career. And he said, बैकिंग वोकलिस्ट तो नहीं बन सकते तुम क्योंकि वो बहुत अलग से सुनाई देता है मेरा वाला वोकल. तो इस वजह से मैं बैकिंग वोकल्स नहीं गा पाता. हाँ, कोई और लीड कर रहा था तो उसके बैकिंग वोकल्स चल रहे हाँ, हैं वो सेम हाँ. लीड और बैकिंग. हाँ. तो एंड ऑल्सो आई थिंक इट्स अ म्यूचुअल सॉर्ट ऑफ लाइक अ thought that his vocals like gel really well with my vocals. Even if like he's singing the lead and I have to sing backing, I would love to do it because our voices really like they work together. That or vocabulary जहाँ तक है I don't have a good vocabulary. I'll be very honest. मैं बहुत mixed भाषा बोलता हूँ. वैसे भी and I asked my mother also this कि हम मेरी जो vocabulary है वो अच्छी नहीं है ऐसा क्यों. And she said because हम हिंदी भी बोलते हैं दिल्ली में रहता था I mean और वो दिल्ली वाली भाषा है तो वो बहुत ऐसा गुच्चर मुच्चर है. So my ancestors are from Pakistan, पंजाब. तो वो थोड़ी I mean पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से पूरा टाइम पंजाबी में ही बात करते थे इसलिए बहुत सुनी है. और जब हम भाषा बोलते हैं उसमें हल्की हल्की उर्दू भी मिक्स्ड है तो देखा जाए तो vocabulary ऐसा झमेला है. तो I do have to look into or Google the right like pronunciations, the right words for whatever I'm trying to portray. So yeah, I mean I cannot take credit for a good vocabulary. I do take credit for the fact that I put in a lot of effort to find words somehow that describe my thought the way I would want I think them ये to. जो confusion है इससे अलग भी लगता है शायद. That's how it is unique. Because sometimes when you are like trying to be too perfect, तो वो unique नहीं लगता है. आपकी मेरे ख्याल से vocabulary इसलिए unique लगती है. True. हो सकता है. Okay. We know the journey of the band from 2017-18, but it was formed way back in 2013-14. So 4 साल कैसे spend किया आप लोगों ने? Did you perform original from the first show? Yeah, it wasn't like that. It wasn't 2013. 2013. It was It was 2015, 2016. Yeah. 2015 May, I think around 23rd May we met. Oh, it was 6:15 p.m. No, I know it because very recently I was going through my mails and I found the plane tickets around that time. Oh. तो ऐसा डिलीट कर रहा था मैं. तो आई थिंक वो हाँ 23rd मई के आसपास था when he sent me the first scratch of Mars was in July. We met for the first time to write that song in around May 2023. So आप पहले शो से ही originally play करते हो सिर्फ? नहीं वो It was that, like he said, like the 60-40 thing we were doing. So we were like clubs and all. We used to try. Yeah, but we played like very rarely. I mean, like we must have played what 5-6 shows like that, and then you were like, yo, this is not happening. Yeah. And also the difference between जब भी हम लोग खुद के गाने play कर रहे हैं और जब भी हम लोग कोई
कवर सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, हम लोग में ही इतना बड़ा डिफरेंस होता था, लाइक हाँ चल ठीक है खत्म कर, ओ येलो डेरिमॉन, and then that like the vibe was very different when we played our own songs But amongst us also. mad respect to people who play cover songs. I feel like for us, I think It's not our thing. it just feels very alien. That's all. Does अगला सवाल है कि आपको कौन इंस्पायर करता है मेलोडीज लाइक अ रोज, गुलाबों जैसी मेलोडी बनाने के लिए? I think the biggest inspiration or I would say path maker in terms of like your musicality is the music you listen to when you grow up. Meri melodies, if you ask me, I think I have listened to a lot of independent Pakistani music that was coming out back in 20 I think pre 2012. जुनून स्ट्रिंग्स, जुनून स्ट्रिंग्स शुरुआत में, उसके बाद जल। फ्यूज ऑन, और फिर देन आई हैड टू काइंड ऑफ डीप डाइव इनटू द होल द पीपल हु आर प्लेइंग इन पाकिस्तान कोक स्टूडियो. I found some people whose independent music I really liked. उनके थ्रू कुछ और bands discover हो गए. I remember there was this one point when I was showing Stu some of my inspirations and stuff. तो वो बहुत उस तरीके का म्यूजिक सुना, प्लस वेस्टर्न म्यूजिक वी विल लिसन टू अ लॉट, प्लस यू कैन नेवर not mention A.R. Rahman and Vishal Bhardwaj and all of these absolute like change bringers. I've always been very, very attracted to what's like different. अच्छा बहुत कुछ है, पर एक ब्रैकेट में अच्छा होता है और एक होता है अलग. अलग। जैसे 1991 में when रहमान साहब came in, he was that guy, right? Then Bhardwaj made his music and he was that guy. Or for writers, there are a few examples that you can always like pick and put in that frame. So वो always था. I was always looking for what was that different good thing. I remember there was this very unknown band called Pukar. और some मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ नाम, वो पाकिस्तानी बैंड था, and I think the band's name was Kayas, and they had a song called Pukar, and I was that was my Linkin Park phase. So they had this song which was this heavy but written in this Hindi Urdu kind of vibe, and I heard it so many times that I would play it loud and I would start singing in my room, and my mother will come shouting, "Abhi chup kar, cheek raha hai zor se." But I've been that guy. Like if I've liked something, I consume it like with all my heart. So I think that's that's the inspiration. और आप लोग, which is like, are there other bands you guys look up to? Coldplay. Yeah, I've been a huge Coldplay fan also, like for years. Coldplay is also 5-member, right? Yes. No, 4. 4 members. 4 is it's a 5. quarter. Yeah, 4 na? 4 members. Bass, Bass, guitar. drums. Bro, it's funny, but like even though I love them, I never like got into the band members. I Yeah, you never just know the Chris Martin. discography. Yeah. No, I just know the music. Oh, okay. Yeah. Like for But I me, can- somehow like actually I don't know, but ये मेरा बहुत लोगों का भी ये भी होता है कि वो कि exactly कौन है in the band and stuff. For me as a listener, I was never that guy. I used to just listen to the song and accept. For me, that is their personality. That song is the band's personality, So for me, it's like I know them. Different style of music lovers, Some people are Yeah. hardcore fans. Okay. Again for Himanshu sir. Come on. अगर आपका म्यूजिक प्रोडक्शन का प्रोसेस आपको ब्रेक डाउन करना होगा स्टेजेस में, क्या स्टेजेस है वो? आई थिंक पहला स्टेज ये है कि आपको इमोशन समझना पड़ेगा गाने का, कि क्या है, व्हाट इज द सॉन्ग अबाउट, व्हाट इज द इमोशन, आर देयर न्यूएंसेस इन द इमोशन. सैड सॉन्ग ठीक है, बट वो सैड किस चीज़ के बारे में सैड है, एज मच इन्फॉर्मेशन एज आई कैन गेट फ्रॉम द आर्टिस्ट ऑन दिस आई ट्राई. सेकेंड थिंग इज टेम्पो एंड स्केल. आप चाहो जितना प्रोड्यूस कर लो गाने को, अगर उसका टेम्पो गड़बड़ है या तो स्केल अजीब है, वो इट्स गोइंग टू साउंड वियर्ड एंड यू विल ऑल्सो स्पेंड डेज ट्राइंग टू फिक्स इट एंड यू विल बी लाइक नहीं चल रहा है, बट दैट्स बिकॉज द प्रॉब्लम वाज प्रॉब्ली जस्ट विद द टेम्पो. And this can go up to 1-2 BPM also. So I would say make sure you get the right tempo, get the right scale.
Third is just lay down the ideas that come to you naturally first. जो आपको लग रहा है, जो मन में आया है, जैसे ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आपने मेलोडी सुनी और एक पूरा ट्रैक ही बज रहा है आपके दिमाग में, पूरा मिक्स मास्टर्ड. यू आर हियरिंग सम थिंग्स दैट आर मेकिंग द ट्रैक मूव अ पर्टिकुलर वे. एक आपको हल्का एक बेस लाइन और ग्रूव का कुछ दिमाग में आया है, वो डाल दो पहले, वो सुनो, वो ये वाले वोकल पे कुछ और इंस्पिरेशन. सो बेसिकली ले डाउन एवरीथिंग दैट कम्स नेचुरली टू यू. जो भी गाने में मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट्स आपको लग रहा है, आप वो करो, आप एंजॉय करो. एंड देन इट्स ऑल अबाउट जस्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks. And the biggest problem for most producers is कि when do I stop, कि कब कब मैं बोलूँ कि गाना खत्म हो गया. और ये एक सवाल है जो बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना. It's just with years of listening and doing it where I also hear something and I feel like अब ठीक लग रहा है, अब मैं रुक जाता हूँ, क्लीन लग रहा है, सब आइडिया सुनाई दे रहा है, इट्स गुड. So these are broadly the sort of the way I go about like finishing a track. And obviously then like the technical stuff keeping in mind like sound selection and this and that. But broadly this is how I go about it. तो आप लोग जैसे म्यूजिक बनाते हो, गाने बनाते हो, तो उसके थ्रू कोई सारे गानों के थ्रू कुछ स्पेसिफिक मैसेज कन्वे करना चाहते हो अपनी ऑडियंस को? Every song has its own message. वो ऐसा नहीं है कि एक ओवरऑल थॉट है कि एज अ बैंड हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं. इस इनफैक्ट दिस इज काइंड ऑफ ऑलमोस्ट व्हाई वी आर कॉल्ड द येलो डायरी. हर पेज अलग गाना ही है, अलग थॉट है. वो उसके दिमाग में एक फिलोसफी है, एक थॉट है, एज एन एक्सपीरियंस. वी आर ट्राइंग टू लाइक पोर्ट्रे दैट इमोशन इन दैट सॉन्ग. I read about that also, why it is called the Yellow Diary. So I'm sure ये सवाल आपको बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने पूछा नहीं. But हाँ, I understand. So it's a collection of emotions. Yeah. Through every song. Okay. अगला सवाल है कि कोई चांस है कि बहुत जल्दी बॉलीवुड मूवीज में गाना आने वाला है आप लोगों का? हमारा एक गाना तो आ गया. वी हैव अ सॉन्ग कॉल्ड बुनियाद that got featured in this movie called Majama. It's a Madhuri Dixit movie, and I mean, for people who don't know, they can always like find it there. तो वो जो एक सपना होता है कि हमारा एक गाना जो बॉलीवुड मूवी में जाना चाहिए, वो सो टू से पूरा हो गया. अब अगला कौन सा गाना और कब जाएगा और क्या नहीं जाएगा ये कह नहीं सकते. बट आई डोंट थिंक वी मेक म्यूजिक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. हम म्यूजिक बनाते रहेंगे और जिस गाने की जो डेस्टिनी है वो. Fair enough. क्या येलो डायरी पियानो सेंट्रिक स्टाइल में गाने कंपोज कर रही है? I don't think so. I mean, but the thing is, I feel like it was a coincidence. I think. I think the yeah. most of the like the writing that we've done so far has been on piano and voice. So like it does happen कि piano and voice become like the meat and potatoes of the song, and then from there Actually, we end up. next उसने ये भी लिखा था कि do the idea start off with the keys. Sometimes Sometimes not they do, always, yeah. not always. But like I mean I feel like there was a phase where Yeah. we wrote a lot and a lot of songs came out of like piano and vocals. एक phase था. हाँ. I think that's reduced now. Yeah. There've been discussions about what is the TYD sound, like, and there are like certain chord patterns, certain movements that like I recognized because like I was like a later entrant into the music, so I was like very obsessed with like what is the TYD sound. It just can't be like a thing, and it is very piano centric. You're absolutely right. It is very arpeggio based. Yeah. There's a lot of like emotion in the arpeggios. There is a lot of like weight given to the ebb and flow of an arpeggio. I mean, if you see that, there's a little like musical breathing that happens that allows emotions to kind of like be carried in there. That's the sound. It is that. अगला स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि कौन से इक्विपमेंट खरीदने चाहिए क्लब गिग के लिए? आर्टिस्ट ऑन अ बजट हियर. So मैं आउट रहता हूँ इस आंसर club gigs के लिए as a drummer I feel like आपको जो लेना चाहिए वो है carry your cymbals and a snare drum. So I personally use the Zildjian K-Dark. तो उसका एक वो पैकेट आता है जिसमें 4 cymbals रहेगी. Just buy that and any like snare drums are
usually like they are very standard as such. I mean, you can get into like the specifics of it, but I would say buy good drum heads. Like a good drum skin on a budget snare drum can also sound really nice. So that's a good point to start, I would say. Stuart? I guess get a bass synth, or if you can't afford a bass synth, get a laptop with a soft synth, and play that with the lowest latency mode. That's what I used to do before I could afford a synth. I used to have like a little MIDI keyboard and a laptop, That's a great hack, actually. Yeah. and have like all my sounds on the laptop and the MIDI keyboard. I feel like then you allow yourself access to much more sounds live if you have a MIDI keyboard and a laptop that's able to handle that. And then electric bass, I feel like you have to find a good rig or even a bass processor that's able to get you a good sound. So I feel like Boss makes a really good, reasonable one. Yeah. Great. Himanshu sir? I'm going to like same answer. I think अगर आपने एक मिडी कीबोर्ड और लैपटॉप ले लिया तो आप लैपटॉप पे साउंड्स अपडेट करते रह सकते हो सालों तक. तो वो एक मिडी कीबोर्ड से जो आपको यूज निकलेगा इट्स गोना कम इन हैंडी. तो दैट्स अ गुड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू have keys, do synth bass also. You can trigger some like Yeah. rhythm stuff also, like anything. sure. Basically, वो MIDI keyboard is the most cost effective thing. Okay. अगला सवाल है. One of my favorites in Mers, and I'm really keen on the thought process behind the song. I think Merge, just like other songs, started with a melody idea that was, sometimes you don't need to be in a studio. You don't need to be in front of an instrument. Melodies just come to you. I remember I was walking on the street and I was just humming some melody. और वो मैंने उस टाइम पे रिकॉर्ड करके अपने पास रख ली. And I remember I was in Mumbai Central, took the local, came back home, and I was still humming the same melody. So then I knew that okay, I'm liking what I'm singing. So then I recorded and kept. Or उस time पे there was this story that I heard from a friend of mine he didn't believe in love, and it was this guy who people started to like sort of like वो छेड़ते हैं लोग दो लोगों के नाम ऐसे जोड़ के, right? So he was, that's what they were kind of going through. Eventually 2 years later in college, they started dating, and he realized that people saw this before, and it happened to me later, even when I kept denying it. And so the idea, and now if you listen to the first like line, it says "Kade mangya ni pyar ni main tera aashik karar." Karar is like I've scored Agreement, that. yeah. That became the song. The sentiment was that, and for some reason, the melody, because and for me, I'm a melody first writer, so the melody kind of kept reminding me of the same story, of this like thought. So वो simultaneously it came onto paper कि okay, if this melody reminds me of this story, and so that became the song. Fantastic. कहाँ मतलब इंस्पिरेशन और अंडरस्टैंडिंग कहीं से भी मिल सकती है गाने के, एक्चुअली कहीं से कहीं से मिल मिल सकते हैं. ओके, कुछ और सवाल करते हैं छोटे छोटे. पहला, आप लोगों का ड्रीम कोलैब क्या है? आप लोगों को किसके साथ काम करने का, कोलैब करने का मन है? Rahman Saab. एंड व्हाई? Because he's the reason where I fell in love with like doing what we do. Like I just want to be in a room where he is there doing his thing and just be there like a fly on the wall also, if I can be, ताकि I can learn from him mainly. एनी अदर आर्टिस्ट? Chris Martin, 100%. Then I was gonna say Coldplay. Chris Martin, Coldplay. Collaborate भी नहीं, मुझे एक दिन बस स्टूडियो में बैठ के देखना है Same. मेरा actually with Rahman Saab is the same thing. मेरे को बस एक दिन. कि उनका क्या प्रोसेस क्या है, like what do they think and मुझे लगता है जब हम लोग पॉडकास्ट शूट करते हैं रहमान सर को हिचकी आती रहेगी एपिसोड में. रहमान सर के बारे में बात होती है, तो एक ना एक दिन उनको यहाँ आना ही पड़ेगा. हम यहीं पे हिचकी Rahman दिलवाएंगे. sir, please. If you are seeing this, we manifested. आप लोग जब गाने बनाते हो उसमें आप लोग थीम्स है हर गाने की, और विजुअल स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो हाउ डू यू डिजाइन द थीम्स एंड द विजुअल स्टोरी टेलिंग?
I don't think we design it from the perspective of like a planned like thought, like a planned like movement towards a certain goal. Har Gana is more like a mental release of like a thought that is being, you know, brewed in the head, and now it's just like writing a diary entry. What happens is that the way we write our music is not too specific to something that you cannot bring a bigger perspective, a different perspective to that. Now, for example, जैसे अफजाई एक गाना है, कुछ लोगों को पता है, when we were writing it, the melody reminded me of an episode back in my childhood, back in my school days. I got my fair share of getting bullied. And there was this one episode that, you know, kind of made me think कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद मैं इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा बेटर कर पाता. You know, I would have been able to ask more questions or just be more interested. कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से I just gave up on it. I never really like got a grip of it again. उस दिन वो मेलोडी सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि that sentiment, you know, kind of made a lot of sense to this melody. We wrote the song. The song, I mean, I built a story of a bird which was, you know, it fell down, it got hurt, and somebody took really good care of it, but kept her in the cage, and started to believe that this bird would never fly again. And the day he opens the cage, the bird flies, looks back and tells him that the next time, thank you for everything you've done, but the next time you find somebody who's injured and you help them, also make sure that you tell them that they belong to the sky. They need to fly again. Right? But now this, when you hear like the idea, you know that there is so many different visual elements that can, you know, that this will fit. कितनी और stories, कितने और scenarios हैं जहाँ पर ये sentiment fit होगा. So मर्ज के साथ में मुझे याद है जब हमने गाना लिखा था तो the first time somebody heard it, they were like, it sounds like a love song. But when you think about it, it's not a love song. It's this guy is saying, I did not believe in it and it happened to me. That's a very different thing, right? So somebody, I think Rohan Jha, Yeah, from Sony, Sony Music. he heard it and he called us up and he's like, guys, I heard the song, but it feels like something else. Now imagine, and this is how he narrated the song to us. He's like, imagine an athlete who used to run and now he's like gotten old and he's sitting on a wheelchair and he just keeps feeling this calling of just getting up and running again. You know, because he believes that he cannot do it, but he's also in love with it, you know. And so when he tries, he does it, even if he falls down, but he accomplished it. And that was the song. Now you see, what I wrote the song about was a different guy's story and how like that was happening. Now you take the sentiment out, you know, like separate the idea from the person. That idea works in so many different like aspects. So we've always believed that we whatever we are writing, if it has the capacity to be bigger than just that particular thought that we wrote for, then we would give it that, you know. And that's how you use the freedom. visual to tell the same story Yeah. in a better format. Yeah, means hero the emotion, but give it a different perspective almost. Yeah. Correct. Okay. There is a lot of content overload. अभी इतना गाना निकलते हैं, इतना सारा काम होता है, उसके बीच में ओरिजिनल रहने के लिए कितना मुश्किल है? I think वो आपके इंटेंशन के ऊपर है. It's like आप म्यूजिक क्यों बना रहे हो. Exactly. I think that's the main thing. अगर आप गाना इसलिए बना रहे हो कि यार मुझे ये प्लेलिस्ट में डालना है और मुझे इतने स्ट्रीम्स चाहिए, तो आपका ऑटोमेटिकली क्रिएशन प्रोसेस ट्वीक हो जाता है. आई थिंक लाइक आई वाज सेइंग अर्लियर, फॉर अस इट्स जस्ट कि हम लोग मिलेंगे, चिल करेंगे और फिर एक एक्सप्रेशन एक्सचेंज में गाने बन जाते हैं. सो बीइंग ओरिजिनल इज एक्चुअली द ईजीएस्ट पार्ट फॉर अस, एंड ऑल्सो बिकॉज 5 लोग हैं और 5 लोगों के अपने अपने इंस्पिरेशंस है, तो आइडियाज बहुत वास्ट भी हो जाते हैं. That's true. तो जब वो एक बन के कुछ हो जाता है, comes as something different only. But then if even with TYD, and this is what even our listeners have said, कि हर गाने का साउंड अलग है लेकिन एक वाइब कुछ सिमिलर है. There's always a Yellow Diary vibe to it. They sound different, you know. But that's because it's
It's just us making it. Yeah. You know, so we are doing different stuff we think, but it's like same vibe. और आप लोग पांचों लोग इंडिविजुअली भी अलग अलग काम करते हो, करेक्ट? जी. सो क्या दिस इज द सीक्रेट, और कि सब लोग एक साथ अच्छा काम कर पाते हैं, कि सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी है सबकी अलग अलग? It helps. I think it helps क्योंकि आप जब कहीं और जाओ किसी और म्यूजिशियंस के साथ और कुछ काम करो तो आपका भी एक नॉलेज बढ़ जाता है, एक थोड़ा वैरायटी आ जाता है. बट ये जो हमारा है ये घर है, तो जो भी आप बाहर जाके कुछ सीखो बिकॉज सब घर में ही आता है इवेंचुअली. यू नो, इट्स लाइक वी कम होम एंड वी लाइक मैंने ये किया, देख मैंने वो किया, मैंने यहाँ से ये सीखा वो सीखा. तो इट्स लाइक वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सचेंजिंग द नॉलेज. तो इफ आई हैव गॉन आउट एंड वर्क विद 10 people and Stuart gone out and worked with 10 people, we have 20 people's knowledge together. If that makes Yeah. sense, you know, The because we're all bringing it experiences, back yeah. home. इट्स मेकिंग मोर सेंस देन इट शुड, बट इट्स अमेजिंग. पर एक चीज ये बैंड जितने भी लोग देख रहे हैं उनको जानना बहुत जरूरी है कि अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होते हुए एक कलेक्टिव इंडिविजुअलिटी होना, यू नो, इट्स पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल. Yeah. So you're making it possible, so it makes a lot of sense. Personally, I think I've struggled a lot with, you know, finding my space within a setting. And I think अगर मैं कहीं भी और होता, I would have not been the artist that I am. I think I owe it to these boys that they've allowed me to just like be free. Yeah, Not be all us, worried. bro. तो क्योंकि आप लोग इंडिपेंडेंट हो, आपने सोनी के साथ अभी भी साइंड है? Exclusive नहीं है, but I mean we can always take our music to So them. आपने सिर्फ सोनी के साथ ही काम किया एज अ लेबल अभी? Yeah. So are you interested in working with any label? 100%. So 100%. if let's assume I am the label, I'm listening to this, what are you looking in the label? To yeah. Involvement. I feel like we need partners who believe in us and will help us like reach our goals. You know, I feel like you want someone who works with you to be part of the idea, to believe in the idea, to kind of be invested in the idea to reach more people. Correct. You know, and I feel like labels that allow you to do that will come on board and they'll give you more ideas, and you can see the enthusiasm because labels are not labels, they're people. Yeah. At the end of the day. At the end of the day, it's people, you know. And if you see the people that believe in the sound, that believe in you, you want to work with people like that. And I feel like more belief adds to your belief, and then something real and magical happens. Yeah. And So I mean, in 2024 क्या गोल है द येलो डायरी का? Rajan, you wanna? I think He raised his hand. He was like No, because I'm very excited. And I've been waiting for you to ask something of this sort since a while. We spoke about this a couple of years back, and I think over this time it's only gotten firmer that we've come to a point in our journey where now we want to go global. We want to represent India, and the partnerships we look forward to need to align in that sort of trajectory. So if there is a label who thinks that, you know, they can help us, or they believe in our sound and they believe that it needs to transcend, then we are happy to be partners with them. But the idea is, push comes to shove, no matter what happens, partner, no partner, we're going there. Okay, fair enough. What is the advice आप लोग देना चाहोगे इन सारे लोगों को? एडवाइस, कमेंट, फीडबैक, कुछ भी. मैं आपको म्यूजिक इंडस्ट्री की कैटेगरीज बता रहा हूँ. ओके, यूट्यूब. YouTube को क्या feedback है? I mean, we don't post, इतना हम ज़्यादा post भी नहीं करते YouTube पे. We've just put up a few videos and we have like a subscriber base. I feel like. थैंक यू. Thank you, yeah. Thank you. Yeah. ओके, द स्ट्रीमिंग कंपनीज Uh, लाइक स्पॉटिफाई. the I have something to say to Spotify actually. Don't post the number of views or the number of plays. It makes no difference. I feel like it's becoming a more like a counting and a very like competitive counting kind of thing. What does that number serve really? You know, I start counting views to our songs and like plays to our songs for no reason. I feel like songs don't need that. you mean at the front end or the back end? On the front end. On the front end. end. Back Okay. end pay, it's okay to have that Yeah, information. because कि It's चलो. important. Yeah. But the front end doesn't need it. Front end Okay. doesn't need it. Because I subjective think that's thing what. because
किसी आदमी का अलग ओपिनियन भी हो सकता है, बिकॉज यूट्यूब पे भी fair. सेम है Yeah. I was हर going to platform पे ही say है। that about YouTube as well. एक्चुअली, Correct. और वैलिडेशन कैसे मिलेगा हाँ. लोगों को, हाँ. तो Okay, maybe. या ओके। मैनेजर्स, आर्टिस्ट मैनेजर्स, I feel like getting into the core of who your artist is and what they like and don't like, and understanding के copy paste नहीं हो सकता है, टेम्पलेटाइज नहीं हो सकता है सबका जर्नी, कि कोई लोगों को कुछ चीज़ पसंद है, कुछ नहीं पसंद है. आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ जर्नी फॉर एन आर्टिस्ट while adapting to a way that they are comfortable so that it's sustainable in the long run. Not like वो एक महीने में वो सब कर लेगा फिर बोलेगा बहुत पक रहा है. You know, so a way where they can find a way to build the artist while they wear their own shoes, essentially. fair enough. Labels, Believe in artists. Like, you know, we were lucky to have found that belief. Please believe in artists who are just starting, you know, even further. ओके। इवेंट एजेंसीज जो आपको गिग्स के लिए बुक करती है, Uh, No veg cheese sandwich on Indigo flights. Every flight, like oh shit. ओके। We have a tech rider, and so many times it happens that we go to certain cities where tech riders are not taken as seriously as they should be. I see Sahil facing this issue a lot where He suffers the most. he likes a certain feel him. quality of drum kits, and then when you reach there and you're like, no, I'm not gonna play on this. You either get me mine or we are like waiting. and also we hate to put That ourselves phase also on- in yeah, that yeah, in that spot, but position. at times Yeah. it is a problem. Okay. Your one piece of comment on AI. Oh, I think it's great. I feel like जब पहले ड्रम मशीन्स आए थे म्यूजिक में, पीपल वर लाइक गए ड्रमर लोग गए, यू नो, या कंप्यूटर ही आया था इन जनरल, दे वर लाइक गया, लाइव का गया. बट ऐसा हुआ नहीं है. देयर इज ऑलवेज अ फेज ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन इट्स न्यू, वेयर इट फील्स थ्रेटनिंग. Yes, AI is on a whole different level. I will not pretend like I even like understand all of it. But in my limited capacity, मैंने जो देखा है, I feel like it's a very promising tool. It's just a tool, like you have a recording studio in your house now. It's very commonplace कि आप घर पे स्टूडियो बनाओ, आप रिकॉर्ड करो और रिलीज करो गाने. That was unthinkable 50-60 years back, and I think AI is the next. No, you don't agree? I don't agree. Okay. I feel like the training data that is being used for AI, that needs to be like regulated, because I feel like if our music is being used as a training set for AI to create more music, then we should be informed. It shouldn't be such that like streaming services just sign off the back end to training sets and then we don't know about it even sometimes. You know, so there's a lot of ambiguity in where the training data comes from, and copyright infringements that will ensue basis that. So because AI doesn't work in isolation, it works from like learning from something. Yeah. So if it learns from other people's music, those people need to like be compensated or figure out some sort of like mechanism to that. So I feel Yeah. like I feel sure, like it's it's a an event. huge like. it is a well, big Food for thought. It is No, a but big like you conversation. said, it's a promising tool if well regulated, right? But it's too nascent. Bro, using data to teach has been happening since Ah, the correct. invention Yeah, but of okay, so technology. tomorrow, Yeah. if a streaming services signs off its training set in Yeah. data, Yeah. then this AI will make like 400 Yellow Diary songs, Correct. and we don't make anything from those 400 Yellow Diary songs. It's just out there. It's inundated. Somebody needs to figure out how do you handle the loss of opportunity and rightful share to the copyright owners. Yeah, exactly. Thank you for Maybe articulating कल that. को कोई स्टार्टअप इस पे काम कर रहा होगा और कुछ ना कुछ तो आएगा ही. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. Yeah. आप लोग नेगेटिव कमेंट्स या क्रिटिसिज्म कैसे हैंडल करते हो? Pinch of salt.
Take life with a क्या pinch of- सुनने को मिलता है. Thankfully, I feel like our fans also do defend us quite a bit. It's very sweet. It's like It's that amazing to really see. like Yeah, it's very it really hits the heart when कोई someone defends you. क्रेजी फैन इनकाउंटर है आप लोगों का? In what way? क्या मतलब कोई फैन अचानक मिला हो और कुछ ऐसी चीजें याद रही हो आपको? ऐसे काफी इंस्टेंसेस हो जाते हैं जहाँ Which one पे are you thinking of? The one that Rajan got married to? Yeah. Yeah, no, I wish she was I wish He's recently married, right? Yeah. Yeah. No, but Say- I wish she was a fan then. The day she saw us for the first time was when her cousin told her about us. Like that day, she was exhibiting at a festival in Surat. She's a fashion designer and runs her own label. And so she was exhibiting some of her stuff there. And her cousin told her ki there's this band who's performing, and he really liked our music. And he played her a couple of songs. So when we were playing those songs live, she realized that, okay, this is that band. So she came out to see us perform. Cut to a month later, I realized that we had matched online way back. And then we both have no idea when did we swipe right on each other. And yeah, that was, and right then the pandemic happened. So we kind of a pandemic. I want to listen the same story from him because he was looking at you the whole time. No, Yes. this is the no. accurate version. This is the Yeah, accurate. yeah. Yeah. This is- Okay. Yeah. Yeah. I was thinking of something else only. I was thinking of, I was just thinking about how there was a gig when this guy came and he had tattooed like our song name. Yeah. Rab Rabrakha. Rab Rakha. And I was like, obviously there are people who travel they travel from different cities to come for shows. Kabhi aise bhi hua, we've met people in a plane who were like, we missed your show, so we took a flight to the next city because we knew you all were going there, so we came here to watch you guys, and which is great. All they're giving us like coming post gig, giving us cakes and hampers and stuff. But I feel like when someone tattoos like something to their body permanently, I think that's like really crazy. Yeah, that's Yeah. insane. But I mean, honestly, we've just been very lucky that Very there are lucky. people Yeah. who support us so well. It's amazing. ओके अगर आप लोग अपनी जर्नी में पीछे जाओ 9 साल हो गए 2015 से Pretty much. वो कौन लोग हैं जिनकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है आपकी इस जर्नी में? I think one guy I would like to give a shout out to is our sound engineer Dev, who became a part of our journey back in 2019. At the NF7 gig. At the end of Yeah, the seven gig. Weekend was the first That time. was the first time he did sound for us, and he's a very experienced guy. He's worked with the best artists in the scene. So for him to be like, I would like to be your sound engineer I think it was a big thing for us also. Because first he's like, ठीक है कोई band. हाँ. देखते हैं मैं कर लेता हूँ because he was doing like some 6-7 gigs Yeah. at NH7 तो he like ठीक है मैं भी कर लेता हूँ ये लोगों को help चाहिए. But then he saw the gig and he's like, okay, I'm in. yeah, these guys know what they're doing. So then he was like, let's jump on, and he became like family. Yeah, he's So he's like, yeah. he's the 6th member of the band now. Like it's we went on the trip, the bachelor trip, and he was with us. Like So he's your sixth sense. Yes, 100%. Yeah. I feel like Arjun also to like our manager from Shark and Ink, he's like really like believes. So like Really I does. feel like he really fuels our belief as well. For sure. So Dude, that since really the time helps. we've signed with Shark and Ink, like there's been a like tremendous change in like the growth of the band Yeah. also at the same time. Definitely. Yeah. Definitely. Even the thought process. I feel like they also get us, you know. He's one of the nicest manager. Yeah, and he's like Sweetest guy. super stand-up guy. Yeah. You know, love hanging with him, love working with him. It's been a joy. he's also become family pretty much. Like we're very close knit like team that way. And who are currently in your team besides 5 of you? Bro, go for it. Yeah. Okay, shout out to Dev, obviously, our sound engineer. Shout out to Arjun. Shout out to Mukul, who's back there. Ashu also, love you. We have Dikshit, who's the youngest member in our band. He just turns 21 this year. He wasn't able to follow me on Instagram because I have a filter. He was like, so he's light on his Instagram. We've had a bunch of people manage us. Raj from the team has also been there to manage us.
Medha, Chaitanya, America, Chaitanya from Australia is like helping us with our social media constantly, telling us to always post, guys. You need to post. You need to post. So And trying to buy a sneakers. yeah. but I have to say all these like people who work in the team for I mean with us, in fact, are such big supporters of what we do and how we should go about it and stuff. It's pretty nice. It's good to have a team Priyanshu. like that. Oh yeah, and a Our videographer. photographer. A videographer. He's there with us He's the throughout sweetest guy. So like there are gigs that we've played जहाँ पे ऐसा लगता था कि थोड़ा अच्छा नहीं मतलब vibe नहीं आया show पे, and then we see the reel, we're like, oh yes. So he will make sure that whatever content goes out of the Yellow Diary is like it looks like Yeah. in a but also particular way. there's one It's more great. thing about him. He's very honest. Very honest. So he's been that guy who's like, आज मजा नहीं आया gig पे. And then he's that guy who'd be like, क्या tight band है. And you see it. कि He'll वो- also be वो like, सच अगली बोल बार रहा ये है. शर्ट मत पहनना. मेरे को उसने कितनी बार Like, बोला he's- I don't have he's clothes that anymore. guy. you know. And he's the sweetest kid, right? He's very hardworking. वो गुवाहाटी से आया है यहाँ पे. So दिखता है कि मतलब वो- and he's working with the best people in the industry, the best artists, the biggest of the people. He's got a really good visual aesthetic also, Very good which I visual feel like aesthetic, he's yeah. always suggesting like, oh, you guys should like maybe change this setup, do it this way, try it this way. And it makes sense. And some of the suggestions have just like come out on top. Yeah, for sure. सुपर Yeah. अगर आप Vitti, who's done our visuals. One guy Sorry. that I really need to like give a shout out to, that's Mohit, who's our live How can we forget, dude? manager. How can we forget? He's Mohit the Bhatia. gangster. He's the OG. इज लाइव मैनेजर Yes. Yeah. Tour manager. Tour manager. tour. So he lines up the tours, to manages them, travels with us, does everything. But what a guy! He's like a machine that absorbs stress but it doesn't come out from anywhere. Yeah. You know, तो like वो रहता है तो we are just like chilling and वो कुछ भी he's fighting fires there and he's like, you guys chill. Yeah. Yeah. I tell you when to come. बहुत लोगों ने पूछा था एक्चुअली कि आप लोगों का भी टूर होने वाला है, कौन सी डेट्स कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं. So that people get अभी to know. dates नहीं आई हैं, but mostly June end or July first week onwards, we are planning to go on tour. And as and when that gets confirmed, we put it out to all our people. So make sure you all follow us on Instagram. ओके. और लास्ट कुछ सवाल. एक इस म्यूजिक इकोसिस्टम में अगर आपको कुछ बदलना हो तो आप क्या बदलना चाहोगे? Especially in India, in our country, there's this. There's nothing to look down upon, but it's something that I feel can be corrected. The expectation of getting music for free, which is why the DSPs who come here struggle. And eventually, you have to realize that a musician makes money through the music he puts out, through the royalties. And if people do not want to pay for it, then the artist who's putting in so much of effort and sweat does not get paid for his effort, and eventually find it very difficult to make his bread and butter. And so if we as a collective can work towards a culture where art in general is given the value that it deserves, and I'm not saying force people to pay or whatever, but if we can bring in the understanding of when you subscribe to a DSP, you eventually add value to the art that is being put there. I think that's a very, very important thing that some people need to start thinking about. I mean, we all talk about it, of course. Honestly, हम हर जगह जाते हैं, हम ये बात तो करते हैं, हाँ ये ऐसा होना चाहिए. But it's about time कि कुछ लोग मिलके इसके बारे में कुछ करें. आखिरी सवाल. द येलो डायरी, जितने भी चाहने वाले हैं आपके, आप क्या चाहते हो कि आपके चाहने वाले आपको कैसे याद रखें, या आपके बारे में क्या फील करें? Brotherhood, like a group of friends that like to hang with, like this. I mean, I don't want to explain it, but this is like हम लोग को always start से था that when someone says the Yellow Diary, they don't think about the music, they think about a feeling. Yeah. It's a feeling. Like the Yellow Diary, the music, our relationship, everything we stand for is it should leave a feeling in your heart, which is like, this is TYD feeling that I have.
basically. That's how I feel like we want to be remembered, you know, as an emotion. You know, there's a lot happening in the world right now. हर किसी के अपने issues हैं, thoughts हैं, whatever. We should aim at being or being able to give them an escape. The Yellow Diary should be looked at as an escape from all the negative, whatever that's happening. You know, when you listen to our music, it needs to help you escape that. And if we achieve that, even if we achieve like 1% out of you know the 7 thousands that billion. listen to us, Yeah. I think there's something that we've achieved there. फैंटास्टिक गाइस, थैंक यू सो मच. Our पहली pleasure. बार पहला बैंड एक साथ आया. हर्ष सो बहुत मजा आया. और मैंने आपको जैसे बताया, हम लोग किसी भी एपिसोड में इतना ज्यादा खुल के हंसे नहीं है, इतनी मस्ती मजाक नहीं किए. हम श्योर आप लोगों को मजा आया होगा. बहुत. और आपने जो जो मैनिफेस्ट किया आज, आशा करते हैं वो सब कुछ हो. एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो ओपन, सो कैंडिड, और इतना मस्ती मजाक करने के लिए. हर्ष, थैंक्स फॉर नॉट कमिंग. May you feel the FOMO. विल सी यू नेक्स्ट टाइम. Yeah. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो Thank मच. Thank you so much. Thank you, man. Ram. What a Thank you, pleasure. Himanshu. Thank Thank you. you, Stuart. Thank Thank you. you, Sain. It's been so much fun.